So, for the information of our attendees today, so we have Shekhar and Shubham as our guest for the day. So Shekhar is into IT industry from last 24 years, and he had been actively investing in real estate and mutual funds for over 20 years. And from last few years, he has been investing into direct equity. And Shubham is actively investing and trading in markets since 2016, and currently his focus is more on swing and positional training, and he like to read and observe price action behavior, which we will be discussing in the session. And he is pursuing post graduation in research analysis from NISM. So I welcome both. Thank you, Prince. Hello, everyone. Thank you, Prince. Hello, Shekhar ji. Hello, good evening. Hey, Shubham bhai. Badhiya, sir. Shekhar and Shubham, I'll be asking questions, so you guys can go one by one. And for the, better voice quality, when the other speaker would be speaking, we will keep our speaker on mute so as the echo doesn't come. So as we start our session with a very basic question, how it all started for you, and basically a backdrop of today's session, what the attendees can expect from today's session. Yeah, Shekhar, you go first. Sure. Thank you, Prince. So I think, first let me just state out what I thought probably we could talk about. And then I think, it also depends on what some of our audience would want to know a bit more. But at least in my mind, I was thinking, I could touch upon some of the investment philosophy that I follow. How do I look at sectors or companies, or where do we get the ideas from? Or some of the things that I personally believe might work out well over the next couple of years, as well as the challenges that I think we probably might anticipate. I think that probably what was on the top of my mind. But obviously, like you said at the beginning, we could keep this more of a live flow, because I do see some very exciting names. I think Ganesh is there, and a couple of more folks. So I think it will be interesting to hear their views as well. But just to quickly to come back, what how this journey started for me, I think as Prince mentioned in my intro, I think I started off as a real estate investor, because my wife's side family, they're all into the real estate space, and then I think in the initial days after I got married, probably after a couple of years, when one of the time I was in India, visited my in-laws place, and then their brothers, sisters, etc. So in such scenario, one of mama of my wife, he took me to a place where he showed me, which is like a pretty far outside, right? It's in the suburbs of the city, Hyderabad city. And he showed me a place where he said, hey, this place was costing about 100 rupees 3 years back. Today it's 200 rupees. And that place had nothing, no road access, nothing else. And I was like, why would even someone buy at a place like this? What's the point? And he had a pretty simple answer that there is nothing more premium than land on this, earth, right? Well, obviously, all of us know it, but sometimes you need to hear it from the right person, I guess. So that's how the trigger started for me into the investing space. And from there on, fortunately, I was living in, abroad back then. So making money in dollars kind of helped in that sense. So every single penny that I saved, I think eventually it went into the real estate investment. And then along the way, I picked up the mutual funds. But the active, equity investing started maybe in the last, 3-4 years. I think I would say probably from 2018 cycle. I think I started active investment at a time where the market was really bad, right? Especially for small and mid caps. So I think in that sense, I probably learned my lessons quite well. What they say, baptism by fire. So that's how I started, and I consider myself still a very young student. So hopefully, the journey will continue. Shubham bhai, over to you. Great. Good evening to everyone. My journey started around late 2015, early 2016.
at that time, see how every beginner would approach the market. So I was also like that only, uh, downloading the money control app, economic times app, and other various financial sources from where we can get some little bit of information about stock market. So it was all about fundamental business and things like that. या कोई अगर कहीं से कुछ टिप मिल गया तो वहां पे देख लिया, कुछ बाय सेल रिकमेंडेशन कहीं आ गई तो वहां देख लिया. तो at the in the starting around you can say about 1.5 year things जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ी. और when the 2017-18 bull cycle started, तो उस समय ऐसा होता है कि पहले बुल साइकिल में तो सबका ही पैसा बन रहा होता है, एवरीवन मेक्स मनी. क्योंकि उस समय आपकी छोटी मोटी गलती भी होती है, इसलिए कहा जाता है कि इफ यू डू लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक्स इन अ बुल मार्केट तो वो मार्केट उसको इग्नोर कर देता है. पर जल्दी ही उसका लेसन भी जब नेक्स्ट बियर साइकिल आता है तो उसमें मार्केट जो आपको बता देता है कि आप गलती कर रहे थे. तो दैट हैपेंड टू मी आल्सो व्हेन द 18 बियर साइकिल स्टार्टेड. So I was not having a sound sell rules, no objective criteria to sell to exit, है ना. तो उसमें क्या हुआ कि my portfolio was down around 55% in the 18-19 small cap mid cap year. तो फिर in 2019 I started to learn about technicals कि कुछ ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए जहां पर अपन सेल कर पाए, एक एग्जिट रूल बना पाए एंट्री करने के बाद. क्योंकि एंट्री तो सब कर लेते हैं पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एग्जिट में, कि एग्जिट नहीं हो पाता है. बिकॉज होता है ना कि सेल करना जो है वो इज इक्विवेलेंट टू लॉस ऑफ कन्विक्शन इन योर स्टॉक. तो इस तरह से देखा जाता है मार्केट में, आज भी ऐसा देखा जाता है. यार आप किसी स्टॉक को सेल करने के बारे में बात करेंगे तो लोग समझते हैं कि इसका कन्विक्शन इसलिए इसने सेल कर दिया. लेकिन ऐसा नहीं ना. आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक मनी इन द मार्केट्स. आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू टेक अवार्ड फ्रॉम द प्रमोटर ऑफ द कंपनी कि आपने 10 साल होल्ड किया था तो अब प्रमोटर आके हमको अवार्ड देगा. ऐसा तो कुछ है नहीं. हम तो सब यहाँ पैसा बनाने आए हैं. तो ऑब्जेक्टिव हमारा ऐसा होना चाहिए कि एक रूल्स बेस्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें एक एंट्री क्राइटेरिया होना चाहिए और एक एग्जिट क्राइटेरिया होना चाहिए. तो 2019 में स्टार्ट किया टेक्निकल्स सीखना. उस समय जरोधा यूनिवर्सिटी का भी नया नया मॉड्यूल आया था. दे हैव मेड अ वेरी वंडरफुल मॉड्यूल. आज भी उसको काफी लोग शुरुआत में रिकमेंड करते हैं बिगिनिंग के लिए. तो वहां से जब पढ़ना स्टार्ट किया फिर उसके बाद उस समय तो इतने, मैं ट्विटर पे नहीं था उस समय, तो रिसोर्सेज भी उतने जितने आज अवेलेबल हो गए उस समय उतने नहीं थे. तो फिर 2020 का जो कोविड क्रैश आया, तो उस समय हालांकि इतना तो मालूम पड़ गया था कि बेसिक जो सेल रूल्स होने चाहिए तो वो तो कम से कम मेरे आ गए थे इन टर्म्स ऑफ मूविंग एवरेज, इन टर्म्स ऑफ डाउ थ्योरी, हायर राइज हायर रोज. तो वहां पे मैं थोड़ा बच गया उस मामले में कि ज्यादा लॉस नहीं लेना पड़ा. और हालांकि क्योंकि कोविड का क्रैश जो था वो एक वी शेप रिकवरी था तो उसमें इतना ज्यादा कोई डैमेज नहीं आया था एज कम्पेयर टू 18-19 बियर रन जहाँ पे एक डेथ बाय 1000 कट्स. तो उस तरह का चीज था वहां पर. तो वो ज्यादा ब्रूटल था एज कम्पेयर टू 2020 क्रैश. उसके बाद फिर देखा कि अगर टेक्निकल और फंडामेंटल को कंबाइन करके कुछ चीजें बनाई जा सकती हैं फॉर इंक्रीजिंग अवर कन्विक्शन. हम कोई एडिशनल स्टडी कब करते हैं? जब हमारा कन्विक्शन उस चीज पे बढ़ना चाहिए उस स्टडी करने के बाद, वरना तो वो तो वेस्ट ऑफ रिसोर्स है कि आप कुछ एडिशनल स्टडी भी कर रहे हैं बट अपना कन्विक्शन नहीं बन रहा उसमें. तो बाई कंबाइनिंग टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स, तो उसमें ऐसा था कि कुछ कन्विक्शन का प्ले है, कुछ आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया उसमें मिल जाए. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डीप फंडामेंटल्स देखना है. बेसिक फंडामेंटल्स है कि कंपनी इन्वेस्टिबल तो है, कम से कम उसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इस तरह के रूल्स स्टडी की और पिछले लास्ट 2 साल से तो और ज्यादा लर्निंग कर्व बढ़ गया है. आई हैव मेट सो मच ऑफ न्यू पीपल जो काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो उनसे भी सीखने की लगातार कोशिश है और बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी हैं पिछले 2 सालों में. तो ये जर्नी रही है मेरी अभी तक और लगातार सीख रहे हैं.
That's really commendable, both of you. So, Shekhar, I'll come to you. Like, if I mean, I'll come to mutual fund and real estate in some time. But again, if I talk about direct equity, so what's your investing style and how you go about generating ideas? I think I first bought my first stock in 2002. It was TCS, because I was working for TCS back then, so it was easy. You have the visibility of what your company is doing, and then you go and buy it. But other than that, one meaningful decision of knowing a company and hence buying the stock. Other than that, everything else was like hunky dory. Whatever Shubhamji was talking about earlier, right? You see a tip here, see a tip there, and that too, 15, 20 years ago, there was hardly any information available, online, right? I mean, this Twitter or Spaces or even the portals like Value Picker or Screener, etc. I mean, you hardly had any information. So most of my on and off trial with the equity, direct equity, was about through the tips or friend ने कुछ बोल दिया या फिर you see something on Economic Times, and hence you go and buy it, things like that. And I think in some senses market was also like that. Market was not reacting as efficiently or as fast as it is reacting today, to the news and updates. It used to take some time back then. So that's how it was, and hence most of the times I was only making mistakes. You typically, by the time a company name appears in Economic Times, or it appears on CNBC, or it appears on any TV channel, the stock would have already been popular. The right investors would have already entered at the beginning of the cycle, and then now I am probably receiving the tip at the top of the cycle, right? And hence most of the times I used to lose money. But then, my investment into mutual funds used to kind of balance it out. And hence, overall, if I see, I probably didn't really lose much, but directly on the stocks, I started losing. And then at some stage, I got an opportunity to buy some property at a very niche place. And hence, that was the time where I kind of winded up all of my mutual funds as well as equity. I think this was probably 2014, 2015. Yeah, somewhere in 2015. So basically between 2015 and 2017, I was practically zero on the direct equity, didn't really do anything. And then, I started the direct equity from 2017, like 2018 onwards, like I was saying earlier, and that was unfortunately not the right time. And to be honest, I didn't really know, the sectoral rotation or how brutal the bear market can be, and hence had that first-hand experience. I think bought some couple of names which kind of gave me a loss of almost like 70-80%, and bought couple of names which didn't really give me the losses, but then you still see the red on your portfolio. So I think that was the learning part. So the learning happened much faster than what probably for some of the folks it might take. And then obviously COVID happened, and then COVID, everybody got lucky, right? I don't even think you need brains. You needed brains to make money during the COVID crash. But the difference that I have made is that I spent my money on the blue chip stocks, right? I mean, I bought the HDFCs of the world, and then as the TCS and Infosys of the world during the initial part of the COVID cycle. And then, 3-4 months later, you start seeing the stocks that you bought are going up no more than 30-40%. But then there are some other stocks which are going up, 2x, 3x in 3-4 months. I started wondering, what the hell am I doing, right? I think that was my serious point of saying, I think I'm done with, chasing the leads. I think I'll start learning myself on my own, and then I'll make my own decisions. So I gave myself a 3-year window. He's saying, I'm going to spend 3 years of time just to learn. It means that even if I lose money, I'm not going to take a step back. I'll still continue my journey. So that's how it started. But coming back to your question, Prince, I think how do I figure out my ideas? I think the way that I see is the figuring out or generating ideas is not a challenge anymore. I mean, quite honestly, if we are tracking some of the good names on Twitter, right? And there are quite a few good names, who are pretty genuine in terms of what they share on Twitter, who don't have really double interest, in terms of the information that they share. Obviously, there are lots of handles who also misuse. So there is that thing required to filter that out. But assuming, we have filtered the good handles, and then, you are
you are tracking their updates, and you are tracking, what they're tracking. So that is one easiest source of information. Right. So, and then the second source of information is, from the portals like Screener and Tijori. For example, I have a subscription to Tijori, and then, and I'm sure Screener also has similar features there. In Tijori, I can just go up and then type, for example, Europe. When the Ukraine war started, Russia-Ukraine war started, all of us knew that Europe is going to be in deep pain, and hence whichever the companies which are exporting to Europe probably will get into some sort of a challenge, as well as some of the companies which are primarily running in Europe, and hence there is a good potential that they might run into trouble, and hence probably give some of the business to India, which is when the Europe plus one theme kind of was being discussed, right? So when that theme happened, if I did not have any tool, if I did not have access to any of the filtering screeners, then I will have to run around, right? But what I did is I just could go to Tijori and then type Europe in one of the search boxes, and then it gives me the list of all the companies which are which have substantial exports to Europe. And I think if some of you might recall, I even shared a list of stocks that I was tracking, which had the Europe heavy in terms of their exports, right? So that's the second way of picking up the ideas. And then the third way of picking up the ideas is there are folks who actually talk about the sectoral rotation, right? So while the whole year of 2022 is not been good for the small and mid cap, while the indexes have done well in terms of the large cap, but for the mid and small caps, it wasn't really a pretty year, right? But then you still had, stocks which made 1x, 2x, 3x sort of a returns, right? And I'm not talking about the fluke returns. I mean, I'm sure, there are stocks which probably ran maybe by the operators, but even the genuine ones, the ones that had meaningful business, making meaningful returns, they also made good amount of money, right? So even irrespective of the bear or bull market at a holistic level, there are always these pockets of businesses or subsectors which are running. As an example, the last couple of weeks, the agrochemicals has been just driving crazy, right? And if any one of you followed Vivek Mashrani Bhai, he talked about it probably 2.5 weeks back, saying agrochemicals is looking good. The journey might be getting started, something like that. I think towards the last week of November. And then, Saurabh also tweeted something like that similarly. All right. So this is the third. Shekhar, I think we lost on you. You can't hear me? Yeah, right now I can. Yeah. Oh, in between there was a lag. Yeah, 5 seconds hardly. Okay. Yeah. So let me quickly summarize. So essentially, I was talking about three ways of picking up the ideas. One is the easiest thing. You are following folks like SYC or SmartSync services, or even the spaces like this. Friends, I mean the spaces that you ran, especially on the healthcare side. I actually picked up a couple of ideas from there. Matter of fact, right? So this is one part. The second part of idea generation comes out of having access to portals like Screener or Tijori, which obviously subscription is required. But if I am serious about making money in the equity markets, I think I should be willing to put 1 or 2% of We lost you again. Can you please check, Shekhar? Can you hear me? Yeah, right now I can. Yeah. Okay, I think I have just removed the headphones, so let's see. Hopefully the speakers should work well. Yeah, it's better now. Okay, perfect. So I was just saying, the Screener slash Tijori, where I think, I have seen some of the people commenting on Twitter saying, hey, there's subscription, why should I pay money, etc. But in my view, I think having 1 or 2% of our, hey, can you hear me, Prince? Yeah, yeah, go ahead. Okay. So, having 1 or 2% of our, capital being spent on learning the right things in the right way, whether it is technical analysis or fundamental analysis, etc., is important. That's what I believe in. And hence, if we have that kind of a mindset, the portals like Screener or Tijori can make wonders in terms of stock idea generation. And the third part I was just saying, maybe that's when I think you guys lost me, is
picking up the subsectoral rotation where there are enough information that you can find within the Twitter. You don't even have to go anywhere else. For example, the agrochemicals, I found it on Twitter. The banks, I found it on Twitter. And now if we follow right people, they are talking about APIs perhaps being the one of the next opportunities somewhere in the the next financial year, and so is with the chemicals at some stage, right? So I think there is enough information. So I don't really believe that idea generation is a challenge anymore right now. I think it's more about how do I avoid the noise and then focus on specific stocks which might help me make good money. So that's typically how I'm approaching nowadays. So instead of running stock by stock, I have shifted my focus to a basket of stocks from a subsector, so that even if one of the 3 or 4 stocks doesn't really perform well, the others will perform well in such a way that the subsector is giving you good money. Of course, the downside is that if the whole subsector falls apart, then naturally, your loss could be looking a lot higher than what it otherwise would have been. Great, great. So coming to Shubham, like Shubham, you talked about techno funda thing, right? So coming to, I mean, how you go about it? Do you study the fundamentals first and then look for technicals, or you generate idea looking at the charts? You screen so many charts and then you find some ideas and then you go about checking the fundamentals. How exactly you go about it? And what advantage do we get using the technicals in our say positional and swing trading? Okay, so see, just like there are two methods of screening stocks. First is the top-down method, and second is the bottom-up method. So it works in technical analysis also. You can have both of these methods. See, first method is bottom-up method. उसमें आप क्या करेंगे कि you run a screener based on your criterias, है ना? I use MarketSmith India. I also use some screeners in charting. So these are two basic screeners. And on every weekend, I do a manual scanning of all the stocks. So तो ये हो गया कि बॉटम अप अप्रोच हो गई कि जहां पर आपने पहले नाम्स को स्कैन किया, उसके चार्ट्स को स्टडी किया, फिर जो चार्ट आपके बाइंग सेटअप में या जो आपका बाइंग क्राइटेरिया है उसमें आ रहे हैं, उसके आपने बेसिक फंडामेंटल्स देखे. तो वो हर वीक में 20-30 से ज्यादा नहीं होने वाले, और कुछ कुछ नाम तो बार बार रिपीट भी करेंगे जो आपके क्राइटेरिया में आएंगे. तो पहला तो हो गया ये बॉटम अप हो गया, जहाँ पे आप पहले स्क्रीन करेंगे स्टॉक्स को, उसके बाद उसके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे. दूसरा एक क्राइटेरिया हो गया कि टॉप डाउन अप्रोच हो गया, जहाँ पे यू विल स्टडी द नेम्स फर्स्ट, है ना. यहाँ आपको कोई ऐसे रिपोर्ट मिल गई जहाँ पे देयर इज अ लिस्ट ऑफ 50-60 कंपनी. फॉर एग्जांपल, recently there was a summit held by one of the broking houses, Edelweiss or Aryan Capital. So they have a whole report of 100+ stocks, जहाँ पे कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आके पार्टिसिपेट करते हैं. तो उसका जो रिपोर्ट के फर्स्ट पेज में या सेकंड पेज में देयर इज अ इंडेक्स जहाँ पे सारी कंपनीज के नाम लिखे होंगे. तो आप उस कंपनीज में, भाई ऑब्वियस सी बात है कि दो जो कंपनियां उसमें जो पार्टिसिपेट की होंगी समिट में, दे विल बी गुड कंपनीज, वेल रन कंपनीज, मैनेज कंपनीज जो वहां पे पार्टिसिपेट की होंगी, और आपको एक लिस्ट मिल जा रही है कंसोलिडेटेड. तो वहां से आप उसके चार्ट स्टडी कर लीजिए, और फिर जो आपको चार्ट अच्छा लगे उसका आप जाके उसके नोट्स पढ़ लीजिए. तो ऐसे भी कई नाम आपको मिल जाएंगे जो जहां पे आपको रेडीमेड लिस्ट मिल गई. लेकिन हाँ, ये जरूर है कि द स्टॉक का जो ट्रेंड होना चाहिए वो अप होना चाहिए, या वो एक बेस फॉर्मेशन कर रहा हो. तो दो आपको डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक नहीं लेने हैं किसी भी हालत में, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस देन देयर इज नो यूज, देयर इज नो आउटकम कि अगर आप डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में नया पैसा लगा रहे हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं निकलता. या तो कंसोलिडेशन हो रहा हो या फिर आप ट्रेंड में हो, तो प्राइमरी ट्रेंड अप होना चाहिए. तो पहला प्रोसेस तो ये हो गया कि आप स्क्रीनिंग करेंगे. स्क्रीनिंग आपने दो तरीके से कर ली, जो तरीका आपको ठीक लगे. मैं दोनों तरीका यूज करता हूँ, लेकिन बेसिकली जो ज्यादा यूज करता हूँ वो बॉटम अप ही होता है. सेकंड जो स्टेज है कि स्क्रीनिंग करने के बाद जो आपने जो लिस्ट बना ली स्टॉक्स की, उसमें आप क्या देखेंगे. तो टेक्निकल यूज करने का क्या फायदा है कि यू विल स्टडी प्राइस एज वेल एज वॉल्यूम. सी, एज सेड बाय द लेजेंडरी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर सर रिचर्ड डी वाइकॉफ, कि वॉल्यूम क्या है. वॉल्यूम इज द एफर्ट
एंड प्राइस इज द रिजल्ट। तो जितना एफर्ट लग रहा है उतना ही आपको प्राइस में दिखना चाहिए। रिसेंटली HCG में, हेल्थ केयर ग्लोबल में, आपने देखा होगा कि जहां पर उसका ब्रेकआउट आना था ऊपर के रेंज में, वहां वॉल्यूम तो बहुत हाई आ रहा था, वॉल्यूम वॉज वेरी हाई, बट द प्राइस वॉज नॉट मूविंग इन कमेंसरेट विद द वॉल्यूम। इट मीन्स वॉट, देर इज एन effort outcome divergence. Volume is giving so much effort but price is not moving, so that is not a good thing. हमको वॉल्यूम और प्राइस दोनों सिंक में होना चाहिए। तो वो एक और क्राइटेरिया है जब आप चार्ट को स्टडी करें, क्योंकि वॉल्यूम जो है बहुत ही एक मिसयूज टाइप का टर्म है। वो बेसिक जो कन्वेंशनल चीज है ना कि वॉल्यूम अच्छा है तो स्टॉक में स्ट्रेंथ है, दैट इज नॉट, वो एक ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है, और वो हमेशा भी सच नहीं होता है। दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल मेथड। ये वॉल्यूम राइज हो रहा है तो वो अच्छा ही होगा, वो किस कॉन्टेक्स्ट में राइज हो रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि प्राइस किस स्टेज में है ना। तो वो भी बहुत चीज देखना इंपॉर्टेंट है कि स्टेज 1 का स्टॉक है या स्टेज 2 का स्टॉक है। सेकंड थिंग है स्टेज एनालिसिस बहुत लोग कर रहे हैं, पर दे आर काउंटिंग स्टेजेस जैसे लाइक नंबर्स, कि 1 आ गया, 1 के बाद 2 तो आएगा ही, 2 के बाद 3 तो आएगा ही, और 3 के बाद 4 तो आएगा ही। ऐसा जरूरी नहीं ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई स्टेजेस अकर, व्हाई स्टेज 1 टू स्टेज 2 विल अकर, व्हाई स्टेज 2 से स्टेज 3 क्यों आएगा, बिकॉज देर विल बी चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टॉक। कुछ इसके पीछे ट्रिगर्स होने चाहिए, तभी वो स्टेज 1 से स्टेज 2 जाएगा। मोस्ट ऑफ द PSU बैंक स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर स्टॉक्स, प्लीज स्टडी देयर चार्ट्स कि अब मूव आने से पहले क्या उसमें ट्रिगर्स थे और किस तरह का प्राइस वॉल्यूम फॉर्मेशन हो रहा था। यू विल फाइंड अ वेरी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न इन ऑल ऑफ दैट, ऑल ऑफ दो स्टॉक्स। तो वो देखना जरूरी है कि स्टेज का चेंज क्यों हुआ। इट इज नॉट ए ऑटोमेटिक प्रोसेस। कोई ऐसा नहीं कि स्टेज 1 आ गया तो अब स्टेज 2 आना ही अपने आप आ जाएगा। देर हैज टू बी, पैसा चाहिए उसके लिए, मनी फ्लो होना चाहिए, तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। और मनी फ्लो क्यों होगा, जब ट्रिगर्स होंगे, व्हेन इंस्टीट्यूशंस विल सी वैल्यू। उनको वैल्यू नहीं दिखेगी तो वो स्टॉक स्टेज 1 में रहेगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में तो 3-4 साल से स्टेज 1 में है, उनमें स्टेज 2 नहीं आएगा। देयर इज नो टाइम, कोई टाइम बाउंड्री नहीं बताइए सर स्टैन इंस्टीन ने कि स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 3 महीने में आ जाएगा। देयर इज नो टाइम लिमिट। तो उस चीज को समझिए। लोग क्या करते हैं कि वो मैकेनिकली यूज करते हैं हर चीज को, दे इंटरप्रेट चार्ट इन मैकेनिकल वे। कोई चीज मैकेनिकल नहीं है, उसके पीछे एक ट्रिगर होना चाहिए, तभी वो चीज बाद में आउटकम पे आएगी। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या कि ऑलवेज गो बाय योर लॉजिक एंड नॉट बाय इमोशंस, एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, कि हम इमोशंस पे चले जाते हैं, लॉजिक भूल जाते हैं। एंड वी ट्राई टू फॉलो सम मीडियोकर टाइप ऑफ सेटअप्स। तो मीडियोकर टाइप ऑफ सेटअप्स करेंगे तो आउटकम भी मीडियोकर ही आएगा। तो वो चीज बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग से एग्जीक्यूशन तक का प्रोसेस आपका एक डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। तो अगर डिसिप्लिन, जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक ट्वीट पढ़ा था कि उसमें लिखा था कि लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडिंग में भी नहीं रहेगा। तो योर आउटसाइड डिसिप्लिन विल डिफाइन योर इनसाइड डिसिप्लिन। तो यहाँ भी वो चीज जरूरी है कि अगर आप हर वीकेंड पे स्कैन करना चाहते हैं तो हर वीकेंड पे करिए, कोई वीकेंड मिस मत कीजिए। फिर एक सेपरेट वॉच लिस्ट बनाइए, है ना। आपके सेटअप हमेशा क्लीन होने चाहिए। योर वॉच लिस्ट शुड बी वेल सेग्रीगेटेड। हर वॉच लिस्ट का नाम होना चाहिए कि ये वॉच लिस्ट इस चीज के लिए है, ये वॉच लिस्ट इस चीज के लिए है, अलर्ट्स आप यहाँ लगाएंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी टीए का कुछ मतलब है। वो ना रैंडमली काम करेंगे तो क्या होगा कि आप हर दिन देखिए मार्केट में देर इज अ लिस्ट ऑफ टॉप गेनर्स, तो कोई ना कोई स्टॉक तो 15-20% हर दिन ही बढ़ा होगा। फिर आप देखेंगे अरे यार ये स्टॉक मेरे पास होना चाहिए था। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा चीज ये है, व्हेन यू बाय अ स्टॉक योर एक्सपेक्टेंसी इज ऑलवेज देयर, आई विल विन, आई विल मेक प्रॉफिट। और जब वो स्टॉक लॉस में जाता है तो इट इज वेरी गट रेंचिंग, है ना, कि हमको अब इसको लॉस में बेचना पड़ेगा। तो जब तक आप लॉस में बेचना नहीं सीखेंगे तब तक तो टीए यूज करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक बार मैंने ट्वीट भी किया था ये चीज कि अगर आप टीए यूज कर रहे हैं एंड इफ आर नॉट सेलिंग योर स्टॉक इन लॉसेज देन स्टॉप यूजिंग टीए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, फिर टीए यूज करने का कोई मतलब नहीं है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। राइट तो राइट। शुभम जी कुछ आप जो आपने चार्टिंग पर स्कैनर बनाया है तो कुछ आप बताएंगे सब लोगों की स्कैनर में कौन कौन से मेन पॉइंट इन्वॉल्व करने चाहिए, क्योंकि आपने काफी लंबे अनुभव से अपने स्कैनर बनाया होगा। तो थोड़ा अगर वो बता देंगे तो कुछ लोगों को उससे हेल्प मिलेगी कि स्कैनर बनाते समय कौन कौन से मेन आइटम उसमें एंटर करने चाहिए, मतलब मूविंग एवरेजेस, MACD,
या वॉल्यूम जैसे आपने बताया, या और जो भी आपने आपके हिसाब से जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो अगर कुछ वो शेयर करेंगे तो शायद थोड़ा सा और हेल्पफुल होगा लोगों को। जरूर जरूर। तो देखिए, मेरे पास 3 तरह के स्क्रीनर्स हैं। एक स्क्रीनर है कि जो एनएससी में 2000 स्टॉक हैं, तो 2000 से मैं उसको 200-300 पे कैसे लाऊं मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से। तो वो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि 52 वीक हाई से वो स्टॉक 20% ज्यादा नीचे होना चाहिए। ये मैं पहला एक स्क्रीनर बता रहा हूँ, ओनली वन ऑफ द स्क्रीनर्स। तो 52 वीक हाई से वो लेस देन 20% या इक्वल टू 20% होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया वॉल्यूम का है कि उसका जो मंथली वॉल्यूम है वो वॉल्यूम में 50,000 और वैल्यू में 5 करोड़, ये होना चाहिए। ये तो आप किसी भी चार्टिंग पे, मार्केट स्मिथ पे, नॉर्मल स्क्रीनर्स पे ये सब क्राइटेरिया बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है। वॉल्यूम का, 52 वीक हाई का। दूसरा, उसका जो करंट मार्केट प्राइस है दैट शुड बी अबाउ 40, 50, 60। वो आप उसका वो सब्जेक्टिव है, वो आप 50 कर सकते हैं, कुछ लोग 100 के ऊपर करना चाहते हैं तो 100, और लिस्ट कम हो जाएगी। जितना आप प्राइस बढ़ा देंगे मार्केट प्राइस उस स्टॉक का, उतना आपकी लिस्ट कम हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो आपके वो पेनी स्टॉक्स या इस तरह के स्टॉक नहीं आएंगे। अच्छा, एक और याद आ गई मुझे बात। वो जो जितने पीएसयू बैंक थे उनके सब प्राइस बहुत कम थे, इसलिए मेरे स्क्रीन पे वो आए ही नहीं। तो मैंने पीएसयू बैंक की रैली मिस कर दी है। इसी वजह से मिस कर दिए क्योंकि वो मेरे स्कैनर पे आया ही नहीं। क्योंकि उसके प्राइसेस सब 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए के स्टॉक थे सारे के सारे, जो अब बढ़ के 40-50 रुपए हो गए। तो वो मेरे स्कैनर पे आया भी नहीं पीएसयू बैंक वाला। तो कई बार इसका ये भी हो जाता है। लेकिन वो ठीक है, वो कई बार तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। और एक चौथा ये है कि क्राइटेरिया की मार्केट कैप का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मार्केट कैप क्राइटेरिया 500 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास का क्राइटेरिया सकते हैं कि उसके ऊपर की कंपनीज आपकी स्क्रीन हो। तो ये तो बेसिक क्राइटेरिया है वन ऑफ द स्क्रीन का, जहाँ पे आपको 200-300 स्टॉक्स मिल जाएंगे, 400 स्टॉक्स मिल जाएंगे। उसको आप चार्ट जो है ट्रेडिंग व्यू पे उसको आप देख सकते हो वॉच लिस्ट बना करके। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि एक है एक आप इसी क्राइटेरिया में आप मूविंग एवरेज का क्राइटेरिया ऐड कर सकते हो कि और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस शुड बी अबव लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। कि 10-20 डेमा जो है वो 50 और 63 डेमा, जो कि मीडियम टर्म हो गया, 10-20 शॉर्ट टर्म हो गया और 200 लॉन्ग टर्म हो गया। तो ऑल मूविंग एवरेज शुड बी, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस शुड बी अबव लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। तो चार्टिंग में तो बने बनाए स्क्रीन आते हैं, आपको लिखने का जरूरत भी नहीं है ना। यू विल गेट ऑल दोज ऑटोमेटेड स्कैनर्स इन चार्टिंग। और बहुत लोग ट्वीट करते भी रहते हैं, आप ट्विटर पे सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मैं लिंक भी डाल दूंगा इस पेजेस के बाद, जो जो मेरे पास स्क्रीनर्स हैं, तो फिर उसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे 3-4 स्क्रीनर्स हैं। और मार्केट स्मिथ में तो रेडीमेड मिलते हैं। मार्केट स्मिथ इंडिया एज ए वेबसाइट है, तो उसमें रेडीमेड स्क्रीनर्स हैं। तो आप जो क्राइटेरिया उसमें सर्च करेंगे उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। मार्केट स्मिथ इंडिया फ्री भी है, पेड भी है। तो फ्री में कुछ फीचर्स हैं, पेड में और बहुत सारे फीचर्स हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पेड ले लें तुरंत ही। जो लोग मार्केट में नए हैं या जो भी सीख रहे हैं, दे शुड फर्स्ट यूज फ्री फीचर्स, एंड इफ दे वांट टू एक्सप्लोर मोर देन दे कैन गो फॉर पेड वर्जन। तो ये चीजें हैं। और एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोशिश करेंगे कि ट्राई टू डू मैनुअल स्कैनिंग एज मच एज पॉसिबल, उससे क्या होगा, दो बेनिफिट होंगे। फर्स्ट बेनिफिट विल बी योर चार्ट विजुअलाइजेशन विल इंक्रीज। जितना आप चार्ट को जितना देखेंगे, जितने वाइड रेंज ऑफ स्टॉक्स को, आपको उतना ज्यादा विजुअल मेमोरी डेवलप होगा। तो और आपका जो चार्ट का रीडिंग स्किल है वो भी बढ़ेगा। स्कैनर तो ठीक है स्कैनर, लेकिन कुछ चीजें मिस भी कर सकता है। चाहे आप कुछ भी क्राइटेरिया लगा लीजिए, कुछ ना कुछ मिस कर देगा वो। तो तो ये भी है कि मैनुअल में वो चीजें आ जाएंगी जब आप सारे स्टॉक्स को स्कैन करेंगे। एंड इट विल नॉट टेक मोर देन 3 आवर्स, अगर सैटरडे संडे दोनों मिला ले तो। शुरुआत में हो सकता है ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कम टाइम लगेगा। इट विल हार्डली टेक 10 सेकेंड्स फॉर अ चार्ट टू रीड। तो ये दो आपके फायदे हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं। राइट, थैंक तो यू शुभम जी, मूविंग एवरेज के अलावा भी कोई और आप इंडिकेटर उसमें लगाते हैं, या केवल मूविंग एवरेज से ही काम चल जाता है? नहीं, सिर्फ इंडिकेटर में सिर्फ मूविंग एवरेज, प्राइस सिर्फ वॉल्यूम मूविंग। मूविंग एवरेज, बस। ओके ओके। तो उसमें आप फिर एसएल जो जो आपने बताया कि बेचना चाहिए नीचे पे, तो कौन से मूविंग एवरेज को आप ना एसएल के रूप में रखते हैं कि इसके नीचे जाएगा तो हम उसको स्टॉप लॉस लगा देंगे वहां पर? ये वाली बात हम लोग जब सेलिंग डिस्कस करेंगे तो मैं बता दूंगा। अभी क्योंकि अच्छा। बीच में फिर वो रिदम टूट जाएगा। जब हम सेलिंग डिस्कस करेंगे, ये सेलिंग दो तरह की होती है, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा मूविंग एवरेज या कब सेल करना चाहिए। तो दैट विल डिस्कस एट दैट टाइम।
Right. So coming to Shekhar, like when we hear about smart money and sectoral rotation, so how have been your experience tracking this space? I mean, how one can find out, and what's your, I mean, take on technicals? Do you also use technicals, and how it has been for you? I mean, Yeah, I mean, technicals I obviously use, but before I get to the technicals, I actually spend, some issue with the voice. can you can't hear me, Yeah, Prince? right. Yeah, you go ahead. Yeah. No, I was just saying, so before I come to before I start, using the basic technicals of, what is the probably the entry price or what are the support levels. I usually spend a lot more time on the fundamental side of the story because when I buy a stock, I would want to buy the stock with an assumption that in the worst case the market is down, over the next month or month and a half or 2 months. Would I be worried about seeing the loss, or would I be okay with it, right? So to get that sort of a conviction, I first focus on the fundamental space of it, even if it's a short term trade. And within the fundamental space, I think the challenge that is happening with the sectoral rotation now is the cycles are getting much shorter and shorter, right? I mean, maybe this year is probably an exception. Maybe we will come back to a little more more stable kind of a market, maybe from the second half of next year. But at least going by what we are seeing within this year, I mean, these cycles were much quicker. There was a fascinating run for the capital goods for about 3-4 months, and suddenly now nobody's talking about them, right? And then the last couple of months, the banks, especially the PSU banks, have been absolutely on rampage. And then the last couple of weeks, agrochemicals picked up, and I think some of these things, in the past, the run used to go on like for 5 months, 6 months, 8 months, 10 months, and hence, even if you catch the trend a bit late, let's say maybe in the second month, it is still okay. You will still make money. Whereas now, if you are late by a month in catching the trend, then probably you will end up buying either at the top or somewhere close to the top, and hence the chances of we making more money is quite limited, whereas the downside is a lot higher, right? I think so. That's the headache that most of us are dealing with, and I think the way I try to identify is tracking almost on a daily basis practically, right? While I spend few extra hours on the weekends, but practically every day I'll spend at least an hour and a half or two just to scan through what are the different brokerages are saying, what's the how is the stocks within the sector are moving, you know so some of those initial triggers is where we can start identifying, and then you start connecting the dots, especially with the global macros, the way things are moving. How the prices of the raw materials are moving up or down. That kind of gives you an idea. So the recent run up, right? I mean, especially in the agrochem space, I think it started at least one of the triggers is because the raw prices, the raw material prices started cooling off, right? And then likewise the PVC space, where some of the companies have started picking up in the last couple of weeks. Again, same space, the PVC prices have cooled off, and hence now there is an opportunity for the folks. So I think keeping track of the raw materials or the supply chain story of that sector is now becoming a lot more relevant in identifying which is the next sector that is going to run, right? That is one part of how I identify potentially which is the sector that is probably might be on the opportunity side. Then the second one is you start looking at the valuations. At what stage a given subsector is looking like somewhere close to the bottom, because none of us can identify which is the bottom or which is the top, but at least somewhere close to that range. For example, if we look at the pigment space, which has been in the news for the last month and a half, where multiple companies have spoken about it in their con calls, and you look at how different companies are talking about it, and then you collate that information, and then you look at the valuations of it, whether it is in terms of the price to sales or even the PE. At times even the PE is probably not the best of the indicators.
we will get an idea that this sector is coming down to some sort of a space where there is a value emerging. Will it recover immediately or will it take 2 quarters? That obviously is anyone's guess. But at least in terms of where the value is emerging, that we can always identify. And if we have the patience of accumulating them on a slower pace, comparing with the technicals, of course, and that's when I kind of reach out to Shubham ji or Ajay or Kundan bhai, etc., to identify what is their view on the technical side of it. So I use that knowledge from them to the research that I would have done myself, and then say, okay, you know what, now we are probably in a range where the downside could be no more than 10-15%, and hence it's probably time for me to start accumulating. And then when it goes down to that level where technically it is saying this is probably somewhere close, and valuation wise it is saying it is somewhere close to the bottom, then that's when I put in little more money, and then now have the patience to start making your returns, right? So that's the second approach. Essentially, just to summarize, tracking what's happening of that sector's value chain in terms of the raw material prices or in terms of the product prices, etc. Plus, how is the valuations are moving along? How close are they to their historical median? And then combining with what are the support levels from the technical point of view, so at least there is a range of where it can be bottoming out. So applying those three typically has worked out well for me, at least this year. And I think if the markets become a little more efficient and then become more bullish in nature somewhere when I say bullish, I'm referring to more of a mid and small cap, because that's where I usually play around. Sometime middle of next year, I think then things could be much better. Right. So before coming to Anubhav, a quick question, Shekhar, like when it comes to fundamentals, so a quick sanity check, what would you suggest to our attendees that this way they can go about checking the fundamentals? And even Shubham also mentioned two approaches in which he looks for fundamentals. So what all he checks, so we'll take one by one. Yeah, Shekhar. Shekhar lost you, I guess, again. Hello? Yeah, right now it's better. Yeah. Okay. So I was just saying, from the fundamentals point of view, I think there are just two pieces, right? One is understanding the sector and understanding what are the the levers or the triggers for it to go back up, right? That is the first part, because I usually buy stocks in two kind of styles. One is the pessimism piece, right? For example, the sectors which are really down, where things are not at all working out in their favor, there are lots of headwinds. That is one type of sector / stocks that I buy. And the second one is where I see the future triggers. For example, if you look at a company like SRF or a company like Radico, where lots of good things are happening within the company, and hence there are enough opportunities that we could visualize where things will work out well in a 2 to 3 year window from now, and hence you start accumulating them as and when they're available at a good range during the corrections, right? So these are the two ways. So either we have enough visibility into their growth plans, either through the capex or through the sectoral tailwinds, or there are stocks or sectors which are which are in the pessimism zone, and hence we identify that in terms of which of those stocks. For example, if you look at pigments, I mean, pigments, there are probably 7 or 8 companies as we speak, right? Now, am I going to go buy all the 7 or 8? Obviously not. And hence, once you identify which subsector is running through headwinds, then you put that effort of going through all those companies quickly to identify which companies have done historically well, which companies have decent management, which companies have the ability to bounce back when the tailwinds start. So you do that kind of a basic check, which can come from the con call transcript, which can come from the credit report thing, or which can come from the annual reports. And then you look at the valuation side of it and the support levels from the technical side of it. So that's typically what I do when validating the fundamentals point of view. Right, great. So coming same question to Shubham, and again, Shubham, what is the, I mean, time when you say keep positions in swing trading and positional trade? How much long you ride any
trade which you go? So as far as swing trading is concerned, it can be from around minimum 1 week to 15 days or 20 days, just in the range of that, 1 week to 20 days, 7 to 20 days. तो स्विंग ट्रेड में ये टाइम फ्रेम रहता है. इफ आई एम गोइंग फॉर पोजिशनल ट्रेड, सो इट कैन go for more than 3 months or 3 to 6 months. So that is the range, around 3 to 6 months. For example, there is a stock called Ganesha Ecosphere, which I have in my positional portfolio. So I am holding it from last around 2.5 months, and I booked some profit also in between. So इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं जहां पर पोजिशनल व्यू रहता है, जहां पर कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स आने वाले होते हैं या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनका टाइम फ्रेम या यू कैन कॉल माय पीरियड ऑफ इंटरेस्ट विल बी ऑन द माय पीरियड विल बी मच हायर. और जहां पर सिर्फ एक टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड लिया हुआ है, जहां पर फंडामेंटल्स का उतना कंसिडरेशन नहीं है, only a basic funda check, so that can range anywhere between 7 to 20 days or less than 7 days also if my SL hits. Recently it happened in HPL Power or in some of the stocks which I took a swing trade. तो वो हमारे पीरियड ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरह से ट्रेड लिया हुआ है. All right. One last quick question before I allow Anubhav. So basically, long-term portfolio में कुछ नहीं है Shubham. It's like all positional and swing trading. Nothing for long-term as in. नहीं, लॉन्ग टर्म तो ऐसा कुछ भी नहीं है. सी बिकॉज देयर इज अ बेसिक रीजन बिहाइंड इट. I don't do any job or anything like that, so that I can have my regular cash flows. So what I have to generate is I have to generate from the markets only. So if I do long-term investing, then there can be periods where I would not be able to generate any return, or I have to, a period of lull in between. So there's a basic reason why I don't do long-term investing, because I have to generate my cash flow from the market only. So I have to rotate my capital into those stocks which are performing. So that is the reason. Right, fair enough. So Anubhav, sorry for keep you waiting for long. Yeah, ask your question. हेलो सर, गुड इवनिंग सर. शेखर सौरभ सर काफी अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग को ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख के. मगर सर मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग को ये फॉरेन ब्रोकर्स लोग का रिपोर्ट कहाँ से मिलता है? कोई सोर्स है, कुछ है, बताएंगे तो थोड़ा हेल्पफुल होगा. क्योंकि उन लोग का जो रिपोर्ट जब भी मार्केट में आता है तो प्राइस बहुत भाग जाता है कोई भी पर्टिकुलर शेयर का. हाँ वो तो And one more thing, Shekhar, like when it comes to report, how should be an approach for an individual retail investor to look at the report? Basically, it should be a starting point, right? So how you see it? correct. You can hear me now, right, Prince? Yes, I can. Yeah. So Anubhavji, I mean so the foreign brokerage reports, obviously they are subscription driven, and I don't have the subscription, so to say, and hence I don't get the reports, like in the first hour itself, right? But typically what happens is through the network that we have built over the last few months, I think there are enough kind people who do share some of those reports when they receive. For example, I think there is one Telegram channel, Equity Insights, who posts some of these foreign brokerage reports once in a while, and then sometimes I get it from Ishmohit, sometimes I get it from Saurabh, and so so whenever they're available, we do publish. But like you said, you are right. The moment when some of these guys recommend, the stocks keep running, the prices keep running up, right? But the way that I would suggest, and going back to what Prince was asking, is while the price may run quickly for a day or two just because a brokerage house has called out a buy on a stock, the reality is it's not gonna run away. There won't be beyond 1 or 2% stocks which will only run up. Like they never see downtime again. It doesn't happen beyond 1 or 2% of the stocks, right? For most of the stocks, even if the price runs up for a couple of days and then it starts consolidating, probably Shubham ji can talk more about it.
And hence I don't usually lose my peace over, अरे ये stock तो भाग गया, अब मैं क्या करूं, मेरा, I missed it. It doesn't work that way, right? There is always a consolidation period. So and hence I don't really worry about whether they are running fast or not. Where I focus on is, if whether it is the foreign brokerage or the domestic brokerage, I focus on what's the thesis behind this. Sometimes some of these brokerages just give a blanket statement and say, oh, this company is set to do well. Set to do well का मतलब क्या होता है? There has to be some trigger underneath कि मतलब ये why they think it is set to do well. So some reports are more detailed and hence it makes sense. But some reports are pretty high level. And when the report is at a very, very broad level, I usually ignore that report. I don't even bother, even if they give 50% target price, 70% target rate, it doesn't matter. Right. So, and hence my recommendation is, don't worry about whether it is a foreign brokerage or domestic brokerage. Obviously, we will get to share those reports. But if you are looking at a report, if you are trying to find out a report in the first hour, then I think the only way you can get it done is through subscription. I don't think there is any other means. सर मेरा और एक क्वेश्चन है, ये कुछ कुछ कंपनीज ऐसा भी है जिसका कोई मतलब रिपोर्ट आपको मिलेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है WPIL, ये पंप सेगमेंट में है, काफी अच्छा कंपनी है, मगर एज कोई ब्रोकर इसको मतलब कवर नहीं कर रहा है, तो ये शेयर अप ट्रेंड में तो है मगर उतना कुछ खास चर्चा में नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा कंपनीज रहता है जो कोई ब्रोकर के कवरेज में नहीं रहता है, मगर फंडामेंटली वाइज टेक्निकली वाइज सब ट्रिगर्स रहता है। तो इन सब कंपनीज में आप लोग का अप्रोच कैसा रहता है? तो मतलब अनुज जी क्या होता है, जैसा कि आप बोले थे कि there are all these brokerage houses, right? They usually form a coverage universe, what they call. And for that coverage universe, they usually come up with some sort of a criteria, either in the form of a market cap or in the form of being the top, 5 companies in the revenues in a given segment, so on and so forth. Right? For example, आज Citibank ने release किया था, the stocks that they are bullish about in 2023. अगर आप वो stock list देखोगे तो you won't get really excited because it's all known names. There is nothing that is a surprising name there, because Yes, exactly. Right, because Citi might have a criteria that says they only cover the large caps or maybe the blue chip companies, and hence you will very rarely find any small cap or a micro cap. And hence, from the brokerage's point of view, I don't really think I've ever seen any brokerage house covering any micro cap. I mean, some small caps obviously they cover, but micro caps and all very, very rare. In fact, I don't even remember seeing. So this is where exactly I was saying earlier कि having access to a good screening portal like a screener or a tijori is where things will come very handy, क्योंकि वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, you can write a pretty simple English driven query that help us understand कि अरे मेरे को I want to look at these stocks which are less than 1,000 crores market cap, but which are still making more than 15% ROCE, and which are available in so and so sector, specifically in the chemicals or API or etc. So for example, one of the companies that I searched, or rather I came across while some of the screening was, Gujarat Mrs. Biosyn, something like that, right? Now, but initially when that stock popped up on the Tijori filter, I don't really think I've given too much of effort towards it, because it just read at a high level discussion of that it's a API player or a pharma player with fermentation, blah blah blah. और मेरे को उतना समझ में नहीं आ रहा था वो. But then incidentally what happened, one of my friend, I think he must be on this space called, matter of fact, Anand, he incidentally spoke about that company saying, hey, this one could be a good dark horse, when it comes to fermentation space. Then it hit me, I think I remember seeing this name somewhere. So then I started digging deep into it to identify what it is and what they do. Does it have future players, etc., etc. So long story short, if we need to identify smaller companies, either small caps or micro caps or nano caps, there are 2 ways to do it. One, we put all that effort in searching through, scanning through, but the challenge with that is, even if you filter through some screening, how do you know that management is good enough, right? I mean, when it comes to micro cap, the company is as good as the management. Sometimes these valuations and then the revenues and ROCE numbers can mislead us. They might do well for a quarter,
the next quarter, if they lose one big customer or something goes wrong with their machinery, then whole things will collapse. And hence, typically, unless we have confidence on the ability of the management, to build the business to a bigger level, these small companies are pretty risky. I mean, if you remember, if I don't know if you follow this Twitter handle, Dr. Prashant Mishra ji. Shekhar, we lost you. Can you hear me? We cannot hear you, Shekhar. Can you hear You me now? please check your No. connection. I mean, we are not able to. Okay, Yeah. I come to Shubham. Okay, yeah. Again, I cannot hear you, Shekhar. So, in the one No, I was not even speaking. time, Shekhar, please check your connection. Yeah. So, Yeah. I'll come to you, Swaraj, after this question. So, Shubham, you talked about stages, right? Stage 1, stage 2, and all. So, how we can identify? There is some connection issue or So we have to आवाज keep क्लियर नहीं आ monitoring. रही है. शुभम अभी आ रही है? हाँ, now it is clear. Yeah. हाँ, तो शुभम, मेरा क्वेश्चन बेसिकली यही है कि चार्ट्स पे हम मतलब चार्ट्स की मदद से कितना लंबा व्यू लेके हम चल सकते हैं, और जो आपने स्टेजेस की बात की, तो हम इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी एडवांटेज के लिए कि कौन सी स्टेज में है और अभी हमें बाय करना है, सेल करना है? देखिए, स्टेज एनालिसिस का जो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है या उसकी जो एक क्या बोल सकते हैं कि आइडियोलॉजी है, व्हाई डिफरेंट स्टेजेस अगर, तो वो ऐसा होता है कि उसको आप एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट कर सकते हैं कि देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर स्टेजेस ऑफ पेसिमिज्म, स्टेजेस ऑफ यूफोरिया इन द बिजनेस स्टोरी. तो वो स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करता है. अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो पीछे बिजनेस में चल रहा है या जो ट्रिगर्स हैं या उस तरह की चीजें हैं, वो अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होती हैं. तो स्टेज भी उस तरह से ही होते हैं कि जो हमारा स्टेज 1 होता है, वो कब होगा? स्टेज 1 शुरू से तो फॉर्म नहीं होगा, वो कहीं से प्राइस जो है कहीं से फॉल होके स्टेज 4 में आ रहा होगा, और जब उसमें इतना ज्यादा पेसिमिज्म हो जाएगा कि प्राइस एक जगह फॉल होना बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेलिंग क्लाइमैक्स, जहां पे कोई सेलर होगा ही नहीं. अब जितनी भी सेलिंग होनी होगी वो हो गई होगी. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पर उस स्टॉक में इतनी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, देन इंस्टीट्यूशंस विल बी इंटरेस्टेड. तो इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे? उस फॉल को रोकेंगे जो लगातार चलती आ रही है. तो उसको बोलेंगे सेलिंग क्लाइमैक्स, एंड देन अ चेंज ऑफ कैरेक्टर विल हैपन. व्हाट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर? फ्रॉम डाउनवर्ड टू साइडवेज. तो वो कैरेक्टर चेंज होता है, सेलिंग क्लाइमैक्स होगा. उसके बाद उस स्टॉक में एक थोड़ा सा ट्रेंड आएगा, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रैली. तो वो ऑटोमेटिक रैली होगी. आपने बहुत से चार्ट्स में देखेंगे, एकदम से डाउनफॉल आता है सेलिंग क्लाइमैक्स को, उसके बाद एक रैली आती है, दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक रैली. तो उसमें क्या होगा? जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर होंगे वो एडवांटेज लेके उसमें से जो भी थोड़ा सा प्रॉफिट होगा वो लेके एग्जिट हो जाएंगे. देन स्टॉक विल गो इनटू अ साइडवेज कंसोलिडेशन, जहां पर एक्यूमुलेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा. व्हाट विल हैपन कि जब बिजनेस में एक डाउनटर्न आता है, उसके बाद एक ऐसा पीरियड आएगा जहां पर जो उसके मैक्रोज होंगे या उनके बिजनेस फंडामेंटल्स होंगे वो धीरे धीरे अलाइन होना चालू होंगे. खास करके ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आपको जो साइक्लिकल टाइप के स्टॉक्स होते हैं या जो थोड़े से शैलो साइक्लिकल टाइप के स्टॉक्स होते हैं, तो या जहां पर मार्जिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, तो वहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छी दिखेगी आपको चार्ट पर. तो क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को मालूम है कि अब अगले वाले साइकिल में अब साइकिल हर स्टॉक का अपना अपना होता है, किसी का लंबा साइकिल होता है, किसी का छोटा साइकिल होता है. तो वो इंस्टीट्यूशंस जो या जो इनसाइडर्स होंगे जिनको इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है, तो वो लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चालू होंगे ना. व्हाट इज एक्यूमुलेशन? एक्यूमुलेशन क्या होता है कि जब उनको जो फ्लोट है मार्केट में उसको धीरे धीरे उनको साइलेंट एक्यूमुलेट करना है. एक्यूमुलेशन दो तरह का होता है, वन इज साइलेंट एक्यूमुलेशन, वन इज मोमेंटम एक्यूमुलेशन.
तो वो साइलेंटली एक्यूमुलेट करेंगे। इसलिए आप जब स्टॉक जब स्टेज 1 में होता है, you will see periods where there will be sudden volume increase and price will not move that much. Volume will increase suddenly but price will not increase that much. तो उस दिन क्या हो रहा होता है कि उनको प्राइस को एक रेंज में रखना है और ज्यादा से ज्यादा फ्लोट कॉर्नर करना है। वो आप डिलीवरी डेटा में भी देख सकते हैं। व्हेन यू विल चेक डिलीवरी डेटा ऑफ दैट डे, यू विल फाइंड दैट वॉल्यूम बहुत ज्यादा था और डिलीवरी भी उस दिन आपको ज्यादा नजर आएगी। जो डिलीवर्ड क्वांटिटी होगी वो टोटल ज्यादा होगी। तो ये पीरियड चलता रहेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जहां पर फ्लोट जितना मैक्सिमम वो लोग कॉर्नर कर सकते हैं वो कॉर्नर कर लेंगे, और जब उस तरह की ट्रिगर्स या कुछ साइकिल फिर से चलना चालू होगा तो फिर वो स्टॉक स्टेज 2 अप ट्रेंड में आना चालू हो जाएगा, जहां पर फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा फ्रॉम साइडवेज टू अप ट्रेंड। दैट विल बी द स्टार्टिंग ऑफ स्टेज 2। तो उसमें क्या होगा कि सडन वॉल्यूम इंक्रीज आएगा बहुत जोर से विद सडन इंक्रीज इन प्राइस ऑल्सो। तो वो भी एक वो मोमेंटम एक्यूमुलेशन है कि जितना बचा हुआ फ्लोट है जो इंस्टीट्यूशंस नहीं कैप्चर कर पाए वो सारा मार्केट ऑर्डर डाल के कैप्चर करेंगे। वो एक साथ मार्केट ऑर्डर डालेंगे फ्लोट में, और सारा जो जिनको एक्यूमुलेट करना होगा बचा कुचा वो जो लेफ्ट ओवर क्वांटिटी होगी सारी एक्यूमुलेट कर लेंगे। फिर क्या होगा, फिर तो उसमें मोमेंटम, एचएनआईज, एल्गो, एचएफटी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स सारे लोग आएंगे क्योंकि उनके स्कैनर पे वो चीज आने लग जाएगी, है ना। जब स्कैनर पे वो चीज आने लग जाएगी तो पब्लिक विल बी इंटरेस्टेड। तो वहां से वो स्टेज 2 अप ट्रेंड चालू हो जाएगा, और साथ में फिर उसकी जो साथ में इसके ट्रिगर्स होंगे, बिजनेस फंडामेंटल्स होंगे, वो भी आपको इंप्रूव होने चालू दिखने लग जाएंगे। वो चीज बाद में नजर आएगी। ऑब्वियसली देयर इज इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री इन द मार्केट बिटवीन रिटेल एंड इंस्टीट्यूशन। उनको ज्यादा एक्सेस होता है, रिटेल को तो बाद में चीजें पता चलती हैं। सेम इन केस ऑफ सेलिंग ऑल्सो, प्राइस पहले बता देगा, अर्निंग्स बाद में पता चलती है कि डेट रेट हो गई है, और प्राइस पहले पता चलेगा। सेम बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री। तो वो स्टेज 2 के बाद एक ऐसा समय आएगा जहां पर एवरीथिंग विल बी गुड, सब चीज यूफोरिया लग रही होगी। एग्जाम्पल आप बहुत सारे स्टॉक्स जो अक्टूबर 21 में टॉप आउट हुए, मास्टेक, आईएक्स, दीपक नाइट्राइट, सीडीएसएल, तो उसमें यही हुआ था ना कि स्टोरी विल बी वेरी गुड, एवरीथिंग विल लुक, है ना, अच्छा दिखेगा सब कुछ। तो कुछ भी खराब न्यूज नहीं आएगी उसमें, जो भी खराब न्यूज आएगी वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो वो एंड जो होता है स्टेज 2 का, दैट विल बी आइदर बाय अ बाइंग क्लाइमेक्स, जहां पर एक दिन में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और और 30-40% का रनअप होगा बहुत ही छोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। और एक दिन ऐसा होगा जिस दिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम आएगा। तो दैट वॉल्यूम विल नॉट बी ऑफ डिमांड वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम विल बी ऑफ सप्लाई वॉल्यूम। तो वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉल्यूम का बार जब देखते हैं तो उसमें लिख के नहीं आता कि डिमांड वॉल्यूम है कि सप्लाई वॉल्यूम है। इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ। वॉल्यूम इज ऑल्सो मिक्स ऑफ, वॉल्यूम इज ऑलवेज मिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डिमांड वॉल्यूम के फेवर में है या सप्लाई वॉल्यूम के फेवर में है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मैंने अपने टाइमलाइन पे ट्वीट भी किए हुए हैं, जब उसमें बाइंग क्लाइमेक्स मुझे दिखा तो कई बार वो सही हुआ, कई बार नहीं भी सही हुआ। पर मेन बात है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक बन रही है, बिकॉज इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपको प्रोबेबिलिटी के फेवर में रहना है। तो बाइंग क्लाइमेक्स आएगा, इंस्टीट्यूशंस विल ऑफलोड देयर शेयर्स इन द हैंड ऑफ रिटेल, और रिटेल जो है वो उस स्टॉक को बहुत दूर तक आगे नहीं ले जा पाएगा, बिकॉज रिटेल का जो डिमांड होता है वो फ्रेगमेंटेड डिमांड होता है। रिटेल का जो साइकोलॉजी और माइंडसेट है वो अलग है, इंस्टीट्यूशंस का साइकोलॉजी और माइंडसेट अलग है। इंस्टीट्यूशंस का डिमांड हमेशा यूनिफॉर्म डिमांड होता है, रिटेल का डिमांड फ्रेगमेंटेड डिमांड होता है। इसलिए वो स्टॉक को ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। और फिर स्टेज 3 जब आएगा तो आप देखेंगे स्टॉक में इरेटिक मूवमेंट होना चालू हो जाएंगी। मूवमेंट विल नॉट बी वेरी ऑर्डरली, मूवमेंट विल बी वेरी इरेटिक। तो मूवमेंट जब इरेटिक होना चालू हो जाएंगे तो आप समझ जाइए, और स्टॉक अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाएगा डिस्पाइट मल्टीपल अटेम्प्ट्स, डिस्पाइट इंक्रीज इन वॉल्यूम्स। तो वहीं मैंने जो आपको शुरू में बताया कि एफर्ट और आउटकम का डाइवर्जेंस होना चालू हो जाएगा। वॉल्यूम इज एफर्ट एंड प्राइस इज आउटकम। तो वहां पर एफर्ट और आउटकम का डाइवर्जेंस चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। उसके बाद क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा जहां पर स्टॉक में ब्रेकडाउन आना चालू हो जाएगा। जो उसने स्टेज 3 में एक रेंज बनाई होगी, उसके बाद उसमें एक रेंज का ब्रेकडाउन आएगा, और स्टॉक फिर वो स्टेज 4 में चला जाएगा। जैसे बहुत से स्टॉक्स मैंने देखा भी, ग्लोबल स्पिरिट्स में, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में, आईएक्स में। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो मोस्टली स्टॉक्स में ये चीज आपको दिखेगी। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जहां पर स्टेज 3 के बाद स्टेज 4 नहीं आएगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो लोग काउंट करते हैं खाली स्टेज 3 है तो स्टेज 4 आना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। स्टेज 3 के बाद फिर से स्टेज 2 चालू हो सकता है। दैट इज मेंशन इन द बुक ऑफ सर स्टैन विंस्टीन, जिन्होंने स्टेज एनालिसिस शुरू में बताया था।
अपनी बुक में, सीक्रेट्स ऑफ प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बेयर मार्केट्स। तो स्टेज 3 के बाद स्टेज 2 फिर से चालू हो सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टेज रीसेट। तो वो भी हो सकता है इफ फर्दर ट्रिगर कम्स, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई जो अंदर वालों को भी नहीं पता थी, सडन इंफॉर्मेशन आ गई। देयर इज ऑलवेज बी सम इंफॉर्मेशन विच विल नॉट बी नोन टू इनसाइडर्स आल्सो एज वेल एज आउटसाइडर की तो बात ही अलग, उनको तो मालूम रहेगा ही। तो कुछ ना कुछ सडन इन्फॉर्मेशन आ सकती है, क्योंकि मार्केट है, डायनेमिक चीजें हैं, तो वो हो सकता है। तो वो, लेकिन वो रेयर केस में होता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम केस में स्टेज 4 ब्रेकडाउन आ जाते हैं। तो ये आप बुक में पढ़िए, स्टैन विंस्टीन की बुक है, उसमें पढ़िए, और उसको रियल टाइम चार्ट्स में आप स्टडी कीजिए। फिर आप देखिए किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक थे, किस तरह के वॉल्यूम थे, और अभी के जो स्टॉक्स हैं लाइव चार्ट में आप देखिए कि कौन सा स्टेज चला है। जैसे बहुत सारे स्टॉक्स अभी स्टेज 2 में हैं, रेलवे के स्टॉक्स हैं या पीएसयू बैंक से स्टॉक हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया स्टेज 2 का, तो आप देख लीजिए पीएसयू बैंक के स्टॉक किस तरह से वॉल्यूम हो रहा है, किस तरह से वर्टिकल रनअप हो रहा है। तो दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेज 2। और चालू स्टेज 2 आने से पहले क्या स्टेज चल रही थी, दैट वाज स्टेज 1। उसमें कैसे कंसोलिडेशन हो रहा था, डिलीवरी वॉल्यूम किस तरह से, किस तरह से वॉलेटिलिटी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉलेटिलिटी में कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। तो लास्ट में हमेशा आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, फिर उसके बाद रेंज एक्सपेंशन होता है। स्टेज 2 का स्टार्टिंग हमेशा एक्सपेंशन से होगा, दैट विल बी रेंज एक्सपेंशन कैंडल। उसके बाद से स्टेज 2 चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जितने चार्ट देखेंगे एक्सपीरियंस आता जाएगा। Right, great, great. So, Suraj, you can quickly unmute and ask your question. And anybody from the attendees, if they have any question, they can send in a request. I'll approve and they can ask. या हाय हाय शुभम सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। तो मेरा बस ये चीज जानना था, जब हम मोमेंटम स्टॉक्स पकड़ते हैं एज इन आईआरएफसी या फिर जितने भी बैंकिंग पीएसयू के स्टॉक्स, और करेंटली कैरिंग मद्रास फर्टिलाइजर बेस्ड ऑन द ब्रेकआउट, तो टेक्निकल से वी नो दैट आरएसआई ओवर हीट हो जाता है तो वी शुड सेल, ऐसा ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। 80-85 जाता है तो वी शुड सेल। बट सर, आपके चार्ट्स में आप चार्ट से ज्यादा रीड करने की कोशिश करते हो, कैंडल स्टिक से ज्यादा रीड करने की कोशिश करते हो, या मूविंग एवरेज से, विच आई सी इन योर ट्वीट्स। तो कैन यू गिव अस सम हिंट ऑन हाउ टू बुक इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स? जैसे अभी मद्रास फर्टिलाइजर आज 20% दे रैन, तो फिर व्हाट विल बी योर ट्रिगर्स टू सी व्हेन टू एग्जिट फ्रॉम दिस ऑल स्टॉक्स? टेक्निकली आप क्या देखोगे? एंड द सेकंड क्वेश्चन टू यू इट्स सर, मतलब वी आर न्यू, वी आर लर्नर्स, वी आर ट्राइंग टू लर्न, तो व्हाट डिड यू फाइंड जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि बिफोर द रैली स्टार्ट व्हाट शुड बी मॉनिटर इन द स्टॉक्स, हाउ शुड बी मॉनिटर इन द प्राइस एंड वॉल्यूम वाइज? कैन यू प्लीज हाईलाइट ऑन दैट ऑल्सो? थैंक यू। आई हैव टू क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था सेलिंग के ऊपर। तो जी सर। सी, सेलिंग आप दो तरह से करते हैं, सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ एंड सेलिंग इनटू वीकनेस। बस इसके अलावा तीसरी सेलिंग कोई नहीं होती है। तो फर्स्ट पार्टी सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ, तो उसमें आप अपना क्राइटेरिया बनाइए। देखिए क्या होता है ना कि आप ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि टॉप टॉप पे बेचेंगे, ये तो कोई कर ही नहीं सकता है, वो तो हाइंडसाइट में होता है ना। तो सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ का क्या क्राइटेरिया है कि यू विल सेल इनटू सम पार्ट्स, कि आप डिफाइन कर लीजिए कि मैं अपने स्टॉक को 1/3 करके सेल करूंगा। तो जैसे आपने बताया मद्रास फर्टिलाइजर आपके पास है, ठीक है, तो आपका बाइंग प्राइस होगा उससे इतना परसेंट ऊपर जब चला जाएगा तो मैं 1/3 उसमें सेल कर दूंगा। फिर अगर स्टॉक एक्सटेंड होगा फर्दर 10% 15%, तो मैं 1/3 सेल कर दूंगा। और फिर बाकी जो स्ट्रेंथ हो, बाकी जो सेलिंग होगी वो मेरी वीकनेस में होगी। तो आप ऐसे करके सेल कर सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि यू विल ट्रेल बाय योर मूविंग एवरेज। अब कौन सा मूविंग एवरेज से ट्रेल करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल। आपने स्विंग ले लिया था तो आप शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ट्रेल से ट्रेल करोगे। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज मींस 10 डेमा या 20 डेमा या 9 डेमा 21 डेमा, वो उससे फर्क नहीं पड़ता 9-10 यूज करें 20-21 यूज करें, वो आपके ऊपर, आप जो सा यूज करना चाहो। तो वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से आप ट्रेल कर सकते हो। उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे मद्रास फर्टिलाइजर है या रेलवे स्टॉक्स है या पीएसयू बैंक स्टॉक्स हैं, दीज आर ऑल वर्टिकल मूव कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सटेंडेड है। तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से भी ये 10-15% ऊपर होंगे। तो उसमें आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। ट्रेड ऑफ किसके बीच में होगा, योर गेन एंड योर कंफर्मेशन, कि ये वीक हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको हमेशा ट्रेड ऑफ लेना पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। तो देयर विल ऑलवेज बी अ ट्रेड ऑफ बिटवीन योर गेन एंड द कंफर्मेशन, कि आप कंफर्म करोगे कि ये स्टॉक अभी ट्रेंड में है या नहीं है। तो आप कंफर्म करने के लिए क्या करोगे, आप शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा प्राइस, उसके बाद अगर वहां से फिर से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बायर्स का डोमिनेंस अभी भी है ना, स्टॉक इज इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स। और अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ब्रीच कर देता है तो फिर आप
उसमें देखोगे कि दैट कम्स द सेकंड पार्ट विच इज सेलिंग इनटू वीकनेस। तो आप वीकनेस में सेल करोगे जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ब्रीच हो जाएंगे। तो उसमें नुकसान क्या हुआ आपका, जो आपकी गेन थी ऊपर की वो आपको चली जाएगी, आपकी 10-12% 15% जो भी आपका गेन होगा वो आपको लूज करना पड़ेगा। लेकिन आप पहले से ही सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ करके आपने 1/3 सेल कर दिया है, तो आपको उतना लॉस नहीं होगा जितना आपकी फुल क्वांटिटी पे लॉस होने वाला था, क्योंकि आपने 1/3 या हाफ क्वांटिटी पहले निकाल दी। तो आपको जो लॉस होगा ऊपर में ट्रेड ऑफ का, वो आपकी हाफ क्वांटिटी पे ही होने वाला है। तो आप एक सिस्टम बनाएंगे कि जब कभी भी ऐसा कंडीशन आएगा तो मैं स्ट्रेंथ में कितना बेचूंगा और वीकनेस में कितना बेचूंगा, या आप पूरा स्ट्रेंथ से बेच देंगे या पूरा वीकनेस से बेचेंगे। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसका कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है और कोई बता भी नहीं सकता इस तरह का रूल। वो इसलिए बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही पर्सनल चीज होती है। तो वो आपको डिफाइन करना है कि आपका ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है। वीकनेस में आप अच्छा करते हो सेल करना, या स्ट्रेंथ में सेल करना आपको ज्यादा पसंद है। तो वो आप कंटिन्यूअस जब ट्रेड्स लोगे, और एक और चीज इंपॉर्टेंट बात है, आप उसको लिख के रखो। मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल या ट्रेडिंग डायरी, जहां पे आप लिख के रखो कि आपने बाय क्यों किया था और सेल क्यों किया। अपने वर्ड्स में लिख के रखो, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जिस भी लैंग्वेज में लिखना है उसको लिखिए जरूर। एक्सेल पे लिखिए, हार्ड कॉपी में लिखिए, उसको लिखिए जरूर कि आपने बाय क्यों किया, सेल क्यों किया, व्हाट वाज योर रिमार्क्स, व्हाट वाज योर लर्निंग। तो उससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा। ये मैं पहले नहीं करता था, अभी मैंने करना चालू कर दिया है, तो उससे बहुत इंप्रूवमेंट आया है। तो वो आप जरूर करिए। Great, great. So, coming इनका to कोई सेकंड Shekhar, क्वेश्चन भी था सर। Swaraj, please ask quickly. Second question was, sir, what did you saw before the sectorial trend started, which we should see अगर ऐसी बार कोई रैली आती है नेक्स्ट टाइम, जैसे I too missed the PSU बैंक रैली, तो what should we consider, if you can give hint ताकि हम लोग देख सके। अच्छा, तो खैर पीएसयू बैंक का तो मैंने भी मिस किया, लेकिन जो आप कॉमन, मैंने माना कि आप विनर्स को स्टडी करो कि पीएसयू बैंक्स में रैली आने से पहले क्या हुआ था। तो आप बहुत ही कॉमन चीज देखोगे कि उसमें वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन थी पूरे सेक्टर के जितने स्टॉक्स थे। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि उसमें जो स्विंग्स है ना, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, वो स्विंग तो बिल्कुल ही बंद हो गए। और बहुत ही छोटे रेंज में, बहुत ही टाइट रेंज में, जिसको हम टाइटनेस कहते हैं टेक्निकल टर्म में, तो सेक्टोरल पूरे चार्ट में आपको दिखेगा कि हर जगह टाइटनेस थी। सेम हैपेंड विद रेलवे स्टॉक्स आल्सो। तो सेक्टोरल टाइटनेस दिखेगी, वॉल्यूम बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और आप उसका डिलीवरी डेटा जरूर स्टडी करो। स्टॉक एज पे जाओगे, वहां पर स्टॉक का नाम डालिए और उसके पिछले 2-3 महीने के डिलीवरी डेटा देखिए। और जिस दिन पर डिलीवरी क्वांटिटी ज्यादा है या डिलीवरी परसेंटेज ज्यादा है, उस दिन का कैंडल आप चेक करो कि उस दिन वॉलेटिलिटी किस तरह से रिड्यूस हुई थी, या किस तरह से वॉल्यूम उसमें बढ़े थे। और उसी को बोलते हैं, वही ना, वही एक्यूमुलेशन है, साइलेंट एक्यूमुलेशन जो मैंने शुरू में बताया। तो वो साइलेंट एक्यूमुलेशन है। फिर उसका आप एक रेंज बना लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के उसमें एक रेंज बना लो, और कोशिश करो कि वहां पे एक अलर्ट सेट करो। बिना अलर्ट के आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स हैं। आप जब उसमें ब्रेकआउट आ रहा होगा तो आपके पास कुछ अलर्ट सिस्टम होना चाहिए। यू शुड हैव योर अलर्ट सिस्टम रेडी। इसमें ब्रेकआउट आ रहा है तो मेरा अलर्ट रेडी होना चाहिए बताने के लिए कि इसमें ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो फिर आप बाय करोगे। तो इस तरह से आप मिस नहीं करोगे चीजों को। ये बहुत जरूरी है, अलर्ट सिस्टम, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, रेंज एक्सपेंशन, डिलीवरी डेटा। तो ये आप देखो। Right. Thank you. Yeah, yeah, Shekhar, So Prince, sorry, just to add to what Shubham was saying to the question of Swaraj ji, I think Swaraj ji, sometimes you also can anticipate what are the fundamental triggers which are turning on for the sector to pick up, right? So for example, जब banks की बात हो रही तो for the last 4-5 months there has been enough chatter and noise on social media, in the brokerage reports, about how the credit cycle is picking up and how some of the for most of the banks the balance sheets are absolutely clean, how they are set for good credit growth, so on and so forth, right? I think sometimes some of those things will come handy as well. And the triggers, the way that I typically found, how do we anticipate from next quarter on things will get better, is based on what they give you the guidance in the con calls. Just to give an example, so there is a live case study that I'm tracking right now, that I want to test my own
ability in terms of how am I tracking is, for example, there's a stock named SRF, and when I say SRF, basically not a recommendation or anything. This is more as an example. So SRF was supposed to complete their capex for fluoropolymers piece, for PTFE material. Now that was supposed to happen by September-October timeframe, but वो हुआ नहीं था. They ran into delays for multiple reasons. कुछ machinery मिली भी नहीं थी on time, etc. Now that is expected to be done by sometime, Jan, February, around that time. So my sense is the moment that is available for the production, it will automatically start pushing the your top line up. And hence my live case study that I'm tracking now, where I made my own notes, which I'm going to track sometime in the next 2-3 months, is ki, will this additional capacity will push the the stock price at some stage. वो कब होने वाला है, that obviously is anyone's guess, but but at least I know that there is a trigger. वो trigger 2 महीने में चालू होने वाला है, or it's going to take maybe one extra quarter, that we need to see. But sometimes we also have this fundamental triggers available in the con calls or in the quarterly reports, which will help us understand from what point in time the tailwinds may start. Right, right. So, Shekhar, coming to a very important question, where money can be made in financial year, say, 24 and 25, and which all sectors and businesses you are looking closely, and I mean, you are finding them interesting from trigger point of view, or say some tailwinds. And of course, guys, any names taken during the conversation will be purely examples. So please don't take that as a buy sell recommendation in any form. Please consult your financial advisor. The idea of spaces is educational, and please take it as a starting point only. Please do your own due diligence before acting on any names. Yeah, Shekhar, over to you. Thank you, Prince, for calling out the disclaimer. I think, and I'm nowhere, even 1% I could call myself an expert, but based on the triggers that I'm seeing, based on the different chatter from various management conversations that I'm following up, I think, in my opinion, the volatility would probably will still continue for at least another 4 to 6 months. Whether it is in the form of the interest rates continuing to going up, or the inflation is still taking its own sweet time to calm down, or some of the other, the challenges, especially which are dependent on China in terms of the raw material, because that is still a headache for some of the companies, right? So I think some of these triggers, some of these, headwinds will continue for probably a few more months. So with that assumption, I personally believe that from the second half of the FY24, I think things should start improving, and the sectors where I am tracking, which I think I have also openly shared on Twitter as well in various times in the recent past, one is the API space. I think API space has been really beaten down this whole probably last 2-3 quarters. I think that is coming into some sort of a value zone. Maybe a bit more correction should be in the value zone. And then likewise, there are some of the chemical names. I think I was talking about, for example, pigments a while back. So to me, pigments is in the value zone. For example, if you look at Sudarshan Chemicals right now, it is sitting somewhere close to 1x price to sales, right? I mean, a company that has just done a good solid capex. I think the unfortunate story for the Sudarshan Chemicals is they have done a big capex for the value-added products, and then the headwind started. So nothing actually got out of that capex now. But it's not going to last long, right? I mean, at some stage, if not now, maybe 6 months from now, things will start improve. And I think when the things start improving in the pigment space, as an example, what could happen to a company like Sudarshan is it's a double advantage. One, the sector itself is going up, right? And then Sudarshan, on the virtue of having done their very important capex for some of the value-added products, I won't be surprised if their sales jumpstart overnight, right? Once the tailwinds start. And hence, a company like that, which is available at close to 1x price to sales, to me is a value, right? Can it fall 10 more %, 20 more %? I don't know. Maybe it can.
But at least personally, I believe that the pigment space is in the value zone, and Sudarshan is probably leader of that pack. So that's the second space in the chemicals, and then the third space I'm also looking at is the textile exports players. And here we need to be really careful because there are lots of businesses available in the textile space. Uh, while some of the folks on this platform may have even better names than what I'm tracking. So with that humility, I am personally tracking Gokul Das. To me, is one of the great stories in terms of how they turned around the company and then the kind of plans that they have to become a billion-dollar company. And then then there is a Spal, which is more of a European player. And by the way, Gokul Das is more of a US player. And the reason why I'm excited about Gokuldas is that when the inflation starts coming down, when the things become normal, obviously their sales in US will continue to improve. There's no question about it. But they also can get the advantage out of the FTAs which are coming up, right? I think there was a recent news that the FTA between India and UK might come down pretty quickly. So if that happens, it opens up the door. It doesn't necessarily mean Gokuldas will be able to start selling the stuff in UK right away, right? And they still have to do their job in terms of identifying the clients and doing the marketing and establishing brand, as well as working on their capacity and debottlenecking and all that. So a lot of work still need to be done. But the point is that there are going to be opportunities. I think so. In that sense, textile export players, I do see opportunities for the right players, whether it is Gokul Das or SP Apparels. I think there should be opportunities there. And in fact, Indo Count is another thing which is more into the home textiles and beds, which is also at pretty cheap valuations. But the challenge with the textiles that I would really want to call out for everyone to remember is it's a very cyclical thing, right? So sometimes the valuations there might mislead us, and hence we shouldn't buy these companies for the sake of the valuations. Rather, we should buy especially these textile sort of a players because they have the growth triggers. So that's the third bucket, which I'm hoping to see some sort of a turnaround in the second half of 24. And then the bigger pie that I'm focusing on is the technology space. And I know which has pretty solid headwinds right now, which will probably continue for another 3-4 quarters. But the technology to me is a player for financial year 25, right? I'm not even counting it for next one year plus. And I'll just give my simple reason because I'm pretty sure there are lots of investors who are in this similar boat as me, that we don't have unlimited capital. And then making for example, making a 50% on a 10,000 rupees investment may not really make too much of a difference to our lifestyle, right? I mean, at the end of the day, the money that we are making, if it can be measured in terms of 1x monthly expenses, 5x monthly expenses, 12x monthly expenses, that's when we will start seeing the difference in our lifestyle, right? Because the money that we are making out of the equities is actually adding up to my other income, whatever I may have through a job or through a business. So, and to me, the way that I look at it is, instead of focusing on, multi-baggers of 3x, 4x, 5x, if it happens, excellent. But doesn't happen, we can't complain because not everybody can, identify the right stocks at the right time. And hence the focus that I have is, if I can do my SIP and accumulate enough money, or rather enough units or stocks for the next 1.5 year. And then when the actual run starts for the technologies businesses in financial 25, I will have sizable capital, and hence on the top of that capital, if I make a 50% money, then that should be a good amount of story to be happy about, right? So that's the approach I'm following, and hence, even though I know that technology will have a headwind of at least another 3 to 4 quarters, I'm still continuing my SIP. But the reality is, for most part of the time, it's going to be in the red. So I need to be personally prepared, right? If any one of you want to look at the technology, that's the catch. So that's the fourth one. And the last but not the least is some of the boring businesses, right? I mean, I've been, tweeting about Tega. Tega Industries almost for 5-6 months now. In fact, it has run up almost 35% since then. But still, it is one of those boring businesses where things will continue to happen. If you look at Tega, basically, it's a proxy for mining space, right? And then the reality is, the products that Tega Industries sell,
more than 80-85% of their revenue comes from the replacement orders. So it's not like they have to keep looking for new customers every second day, right? So it is given that 80% of their revenues is taken care by default. So which means the opportunity that they have in terms of whenever they're able to find extra customers, extra clients from different parts of the world, their revenues can go up as good, and it will only add to their the margins, because the product portfolio that they have is absolutely top class, right? So Taiga is one example. Then Shubham Bhai was talking about Ganesha Ecosphere. While the Ganesha Ecosphere ran up like, probably 4-5x over the last year and a half, in my opinion, I think the story is not even started for it. We are just in the, touching the tip of the iceberg there. There is a plenty of, opportunity for Ganesha Ecosphere, because most of the companies nowadays have started mandating, within their companies. For example, there is a European bank which mandated sometime last year that more than 70% of the credit cards that they're going to issue should be from the recycled material, right? So it's a mandate. and guess what? Within the year and a half, they actually achieved the target, right? Because these are the ESG goals that these big listed corporates have, and once they announce it publicly, they have to go meet it, right? Especially regulators will also be tracking. And likewise, now recently, Coca-Cola is coming up with some of these things that going forward, 30% of their bottles should be recycling, and Pepsi will have this, and then bunch of other QSR players will have it. So the long story short, the trend of using the recycling material, especially in this services industry, is gonna pick up. It's just getting started. So the next 5 to 7 years should be huge for it. So while Ganesha Ecosphere is one example, I think it is worth checking out some of the other recycling companies as well, because the theme is just getting started, right? So that's the fifth one. So these are broadly where I'm looking at, Prince. Besides this, I think there are some companies, in the real estate space, are in the auto space, and they're beaten down right now because of lack of exports. For example, if you look at Carousel, it's a pretty decent company, run well, good management, but they are completely down right now because most of their revenues come from exports, and all of us know that the real estate market is like a mess in North America right now, right? So, but when the tide turns, whether it takes 2 quarters, 3 quarters, that's anybody's guess. These are the type of the companies which are going to make quick money and fast money, right? So I think it's good to keep some of these additional names which are right now beaten down because of the export issues. Doesn't mean we have to buy them now, but keep it on the watch list. Keep watching their valuations. Once they come to a state where it is less than one price to sales, etc., then to me it's a blind buy. There is no second thought there should be. Great, Shekhar. So same question to Shubham, and after that, Nimish can unmute and ask his question. Yeah. आई थिंक सेक्टर्स कौन से अच्छे करेंगे ये मेरे लिए राइट क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि माय अप्रोच इज टू टेक इट एज इट कम्स. सो अगर कोई सेक्टर होगा जो अच्छा करने वाला होगा, या देयर इज सम कंसोलिडेशन गोइंग ऑन बेस्ड ऑन चार्ट्स और बेस्ड ऑन इंडस्ट्री फंडामेंटल्स, तो वो कहीं ना कहीं से चीजें निकल के आ जाएंगी. तो इसलिए रादर आई वुड नॉट लाइक टू एंटिसिपेट कि कौन सा सेक्टर अगले 1 साल या 2 साल में अच्छा करेगा. आई वुड रादर लाइक टू go on a take it as it comes approach. So that would be from my side. Which is fine, शुभम भाई, बट जैसे पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग की अगर बात करें तो सिर्फ इसके बेसिस पे हम कैसे पैसा बना सकते हैं, या क्या अप्रोच होना चाहिए कि हम एटलीस्ट पैसा ना गवाएं? देखिए, जहां तक स्विंग है या पोजिशनल है, तो पहली बात तो कि पैसा गंवाए नहीं, तो उसके लिए 2 अप्रोच है. पहली बात तो ये कि अगर आप इफ यू आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, तो स्टॉप लॉस आपका बहुत टाइट होना चाहिए. और पोजिशनल में यू कैन हैव अ लीवे ऑफ अ स्टॉप लॉस वेयर यू कैन अलाउ द स्टॉक टू रिएक्ट नेचुरली, क्योंकि पोजिशनल में आपका जो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा लंबा होता है. स्विंग में और पीरियड ऑफ इंटरेस्ट इज लेस, तो आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप बहुत वाइड स्टॉप लॉस रखेंगे, है ना. योर स्टॉप लॉस कैन बी एनीवेयर बिटवीन 3 to 5%.
3%, 2 to 3% is a very tight stop loss. Up to 5% it is an average stop loss. In case of positional, you can either follow a medium term moving average, है ना? तो और you can follow swing highs and swing lows, कि वहां पर आप सेल करेंगे. तो वो आपको अपना पीरियड ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करना है, और मेन है कि आपको कैपिटल रोटेट लगातार करते रहना है. इन केस स्पेशली इन केस ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, तो आपको कैपिटल अगर रोटेट करना है, तो अगर आप किसी स्टॉक में यू गेट स्टक इन अ स्टॉक, इफ यू हैव नॉट टेकन एनी स्टॉप लॉस, तो आप उसमें फिर होप में चले जाएंगे कि ये जब मेरे प्राइस पे आएगा तो मैं इसको फिर सेल करूंगा. तो दैट इज अ रॉन्ग मेथड, क्योंकि होप इज नेवर अ स्ट्रेटेजी. होप कभी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती है. तो आपको अपना एक रूल बनाना है कि लॉस, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉस आपको बिल्कुल रूथलेसली काटना है. उसमें आप कोई भी इफ एंड बट नहीं कर सकते. अब प्लेसमेंट ऑफ स्टॉप लॉस, फिर आप या तो एक लेवल पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या आप एक प्राइस का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. पर अगर दोनों को आप कंबाइन करके, अगर आपकी एंट्री ठीक जगह हुई है तो आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट भी ठीक जगह होगा. लेकिन अगर आपकी एंट्री एक्सटेंडेड हुई है, देन योर स्टॉप लॉस या तो वाइड होगा, फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ होगा, या तो आपको साइजिंग कम करनी पड़ेगी, है ना. देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर साइजिंग. If you need wide stop loss, your sizing will be less, and if your sizing is more, then your stop loss should be tight. तो वो डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री कहाँ पे हो रही है. इसलिए मैंने बोला कि एक अलर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है जो आपको सही टाइम पे एंट्री करा सके. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और बाकी तो फिर आपकी तो एग्जीक्यूशन पे है सारा चीजें. फिर एग्जीक्यूशन है आपका, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि उस ट्रेड्स आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, योर एग्जीक्यूशन स्टाइल, योर फ्रीक्वेंसी, योर मैग्नीट्यूड. तो ये सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग टेक्निकल टर्म्स. ऑब्वियसली इन एन ऑडियो फॉर्मेट आई कैन नॉट एक्सप्लेन टीए इन अ डिटेल्ड फॉर्मेट, क्योंकि ऑडियो की एक लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि टीए एक विजुअल चीज है जो कि सामने से दिखने से पता चलती है. लेकिन इस तरह की चीजें हैं जो आप लगा स्टडी करेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे, या जो लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, तो उनके आप स्टाइल देखेंगे. कॉपी मत कीजिए, डोंट कॉपी एनीवन, क्योंकि वो अपने टाइम के ट्रेडर्स रहे हैं, उनका अपना कैपिटल है, उनका अपना रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क प्रोफाइलिंग है. तो आप उनको कॉपी मत कीजिए, लेकिन जो चीजें आप सीख सकते हैं उनसे, वो आप और अपने स्टाइल में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो वो चीज करने की कोशिश कीजिए, तो वो चीज आपको जरूर हेल्प करेगी. Great, Shubham. So, Nimish, you can unmute and ask. Hi, Shekhar, this question is for you. I take with you once and then I'll probably jumpstart it with Shubham. You mentioned about A and B. That was your first thing. I mean, could you just, that looked a bit jargon to me. What was the space are you talking? Which was the sector that you mentioned? The first one, I think I was talking about API, if I'm not wrong. API. So API, yeah. I was there in China just a week back, and I had a subtle observation which I just wish to put it across. Yeah, you please. did mention about the textile sector. I happened to meet a couple of diplomats. I work with United Nations, and distinctively I can tell you from the type of policies which have been shaping up, are definitely looking. The traction is more towards Southeast Asia and not towards Asia. I say this with a lot of weightage is only because during Obama administration, this was specifically made by an American who was there on the board. And he did mention about the free trade agreements which are available for textiles, which definitely has a thrust in terms of their exports being made so cheap is only because of the excise and the import duties which have been levied was never there, have been annihilated to an extent which they've extended for the next 17 years. Step one. Step two, that in terms of raw materials, India, we have to distinctively understand that cotton as a byproduct. I'm specifically putting a thrust with understanding the cause and an effect relationship. That particular as a byproduct, we definitely have to understand that we are not amongst the top, the staples which come, we have not been amongst the top producers in terms of that making a pertinent image of that particular as a raw material in foreign countries. So when a raw product and if the policy from a geopolitical standpoint are both having their cross against an existing PLI, which has been thing, I have my own apprehensions as to how do you look at that particular sector.
That's question one. Number two, you did mention about technology. Now, that was a general, throw of hat in the ring, or what was the technology that you were referring to? Each sector would be looking at something which is digitally applications have been moving inside out in most of the thing in the terms of the capex which have been happening around in stage two and stage three have been looking at those type of formulations on a larger scale. So these what would be your imprint on this, Shekhar? Sure. Sure. Thank you, Nimeshji. In fact, I think that's a very valid point in terms of what you are talking about on the textile raw material related challenges, and that's why at least I have limited down my tracking only to three or four players. Matter of fact, right? Because I think at end of the day, cyclicals, at least based on my past experience, the ability of running a cyclical company well is pretty much lies with the management, right? So the management has to be absolutely smart. So that was one of the reasons why I personally like Gokul Das, because they have a new boss, I think, who joined about 2.5 years back. Until then, Gokul Das was like in dump yards, right? Even though they had good set of orders coming from US, they were not able to deliver. The supply chain, the whole supply chain was completely broken, and this gentleman has kind of not only fixed it, but he is constantly pushing the organization to to find more and more efficiencies. So the bet for me on Gokuldas is not as much on let's say a textile as a sector, rather a combination of the ability of the management who already have a established brand with their US customers, and plus the FTS which are going to pop up in terms of opportunities that might open up the doors for them in the other markets, which may not necessarily happen within a quarter or two. Obviously, it will take longer, but at least and you are right. So some of these PLI pieces, and I think there was a recent report also from Credit Suisse saying some of these PLI schemes may not necessarily materialize into instant gratification for the companies as well. So we have to pick and choose which player we want to play with. So that's on the textile part. Coming to your second question on the technology. So technology may, end of the day, there are three broad kind of players, right? So one is, let's finish this process. Because there's a very broad statement which came out when you look at sector. You did reiterate about it as a sector and not specific. You jump started it on Gokuldas after the silo was opened. What I'm trying to say is with the type of midterm elections that we have faced across in the US, with the type of recessions that we are expecting, with the type of medians which have been there, and all reports which probably hit that we are heading towards a gross, mal-defined recession, which would be hitting the deck in the US and Europe to a larger extent, making the crunch and making these guys realize. So, all these aspects would we have to really reprimand ourselves as to how we are thinking. Are we consciously thinking about it as a sector? Because the PLI, when you said most of it, the credits, I haven't got through the reports, but on a marginal value, isn't it that we probably heading to elections in 24? PLIs probably, we have tried doing it in ethanol sector, and look at the type of fundings which have been tossed up across with the general elections coming in 24 onwards. What would be the sensitivity and specificity of these PLIs probably giving you that sort of an impact, which would make you invest your hard-earned money, be it through your lump sum or be it through SIP? That's a pertinent question, which I think I would be interested in knowing, Shekhar. So, Nimesh, I don't believe I have spoken about the PLI, though. I was talking about FTA. When we talked about a sector, you did talk about textiles. Your conversation started off not with Gokuldas, but you did mention about it. These are my apprehensions and fears about, because PLI coming in and you opening up sector. I don't want a wrong message to be understood. Maybe my conceptions could be wrong. So fair enough. Absolutely fair enough. It's good to have clarity than a misinterpretation, right? So let me just rephrase what I started off with. So I basically said the headwinds in general is gonna continue, based on my knowledge, is gonna continue for next couple of more quarters. So there is no way some of these things are turning around. So I don't know initially, Nimesh, if you heard in the initial set of questions, typically my investing style
one of the common styles that I generally follow is the buying pessimism, right? That's where I usually focus on. So to me, in that sense, so when I was talking about the API, I know this question is for textile, but just to give you broader context, when I was talking about the different sectors as a question from Prince, whether it is the API space or the textile space or the technology space, I was more talking about it from the pessimism point of view. Now, with that context, in the textiles, when I said, I also reiterated that in textiles, we should not look at every other company because the cyclicality is pretty brutal in there. And hence, we need to pick and choose which player. And that the three names that I had taken, one was the Gokuldas, second one was SB Apparel, the third one was Indocount. So in these three, again, is there a turnaround in the near term? Absolutely not. And you are spot on there. The recession is going to continue. I don't think there is going to be any respite over the next few quarters, which is where these are meant for tracking, right? So these are meant for tracking. That at some stage, once we know that the recovery is going to start, the inflation is cooling down, and the market is getting back to where it ideally could be. Once we start seeing those recovery signs, that's when we have to take a look at it to say, okay, these are the players. Are they worth investing right now? Because based on the valuations where they are, for example, today, Gokuldas is sitting at 370, 380. Is that the price I'm going to buy? Absolutely not. I will only buy Gokuldas when it is coming to somewhere around 300, right? So my confidence is when I'm a buy pessimism player, as the things go wrong over the next couple of more quarters, at some stage the price is going to come down to 300. If it comes to 300, I'll buy. If it doesn't come to 300, I'll just pass on, right? There's always a next opportunity. And same goes for SP Apparels, which is more of a European-based player, and then the Indocount, which is a home-based, home textiles-based player, primarily out of US. So my limitation out of 10-15 companies that I had looked at within the textile space, I narrowed down to these three for the specific trigger points, which are more coming from the growth side of the story, from the management side of the story, than any the side benefits that they may get out of the sectoral tailwinds. If the sectoral tailwinds also benefits them, that's excellent, wonderful. But then I wouldn't want to put my money based on certain assumptions that as a sector something will go up. Rather, I should have enough thesis pointers that will say, okay, for this company, these are the 3 or 4 reasons which I believe will work out well, assuming under these conditions. So my conditions right now, just to reiterate for the Gokuldas or SPAL, is that they'll continue to be in the downtrend in terms of their business. I'm not referring to the stock price when I say downtrend, in terms of the business. But as things start improving in terms of inflation calming down, and then economical recovery starts happening across Europe and US, these are the players that I personally believe will have the head start compared to some of the other players within the textile space, which I'm not even tracking, by the way. Is it a fair assumption, Shekhar, that if I've given a choice, with all due permission from the host, that if you have to look at one single where you would say that this is one where I would be having my traction of the top 3 priorities, what sector would that be? Amongst all that you mentioned, because the ones that I have probably having a lot of weightage about understanding the geopolitical paradigms would be the type of, with the capabilities of research and development which the defense sector has opened up. Likely because of the lineage that I carry with the diplomats who've been following up and doing some extensive research, has been related with the aerospace defense and with maritime defense. So I could not hear that, sector which you did, not that I'm sure about, but maybe before I joined, you could have talked about it. But isn't a defense R&D based sector, with so much of startup and SME type of thrusting, which has been opened up with the fund lines which have been opened up, won't you be looking at that and trying and creating a pivot around that? And rather than looking at this particular cluster of the sectors that you mentioned. So, okay, I think maybe the confusion here is, I was talking about the sectors which are going to come up in the next 1.5 or 2 years. Whereas defense, matter of fact, I do hold some of the defense companies in my portfolio. So whether it is defense or the railways or the financials, I think they're already running well, and some of the capital goods also.
And hence I was not really, talking about some of those names because that's a pretty much open story. Everybody knows about it, right? I mean, there are enough threads running on the Twitter, enough, information available in the, whether it is the brokerage reports or whether it is through the, different media interviews, whatever. So there is enough noise about defense, railways, banks, and hence I was not really referring to it. But you are right. I mean, if somebody is gonna find a company at a decent, with a decent margin of safety in the defense space, absolutely. I mean, defense is a long-term story. There is no question about it. In fact, I do hold a couple of companies, where I do believe they're going to have a long runway. But my response to Prince's question was about the sectors which are going to come up in the future. Does that make sense, Nimeshji? It does. I think, yeah, that does make sense, Shekhar. Thanks for your time. Thanks for your input and questions, Nimishji. So moving to Kundan. Kundan, you have any comments to make or any questions from Shubham and Shekhar? And then we have one question from Shashank, which I'll ask thereafter. हाय प्रिंस भाई, हेलो एवरीबॉडी। क्वेश्चंस तो नहीं है मेरे पास, बट हेलो शेखर जी, शुभम भाई, जस्ट अ सिंपल शाउट आउट टू शुभम भाई एंड शेखर जी। लाइक आई रियली लव दिस बोथ ऑफ देम, एंड शुभम भाई को मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि ही इज़ डूइंग अ रियली good job in analyzing the charts and posting them and helping people these days. And Shekhar ji se I have just recently connected and just I joined this to support both of you, and really loved this session here, whatever I have heard till now. And keep doing it, like keep growing guys, or keep helping everybody. So this is what from my side. Thank you Kundan bhai, thank you. Thanks, Kundan. Yeah. So basically, one question is from Shashank to both Shekhar and Shubham. He's asking about position sizing, averaging up, and what is the maximum allocation you give to one position, especially in case of swing trading and positional for Shubham. Yeah. Okay, for Shubham, na? The question is for Shekhar and Shubham both. Yeah. Okay, so I will go first. See, as far as swing trading is concerned, my maximum position sizing, personally, I will talk about myself, that my maximum position sizing in swing trading is around 20 to 25% in a single stock. When I'm doing swing trading, I'm talking about maximum position sizing, and minimum would be anywhere between 8 to 10%. Because swing trading में क्या है कि हम लोग 10, 12, 15 या 20% की मूव को टारगेट कर रहे हैं, और अगर हम साइजिंग कम कर देंगे 2%, 3%, 5%, तो उसमें होगा क्या कि योर पोर्टफोलियो विल नॉट मूव इन दैट मच मैग्नीट्यूड. सो स्विंग ट्रेड से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू मूव अवर पोर्टफोलियो, कि जिससे कि अपने पोर्टफोलियो में एक डिफरेंस नजर आए. So if you are doing 20% sizing and if you are capturing a 20% move, your portfolio moves up by 2%. And accordingly you can adjust your sizing on the expectation which you are the move which you are expecting from the stock. So क्योंकि एक स्टॉक में 8 to 10% या 15% का मूव रिलेटिवली इजी होता है कि उसको कैच करना, वीजा वीज कैचिंग अ 50% और 100% मूव इन अ स्टॉक. तो ऐसे स्टॉक्स आप रेगुलरली कैच कर लोगे जहां पर 8-10% का या 15% का मूव आ रहा है, और उसमें अगर आपने साइजिंग ठीक ठाक की है इन अपवर्ड्स ऑफ 15%, 20%, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक साइजेबल इसमें इम्पैक्ट आएगा. दैट मेन बात यह है कि जब आप इतनी बड़ी साइजिंग ले रहे हो तो योर स्टॉप लॉस शुड बी वेरी टाइट. अगर ट्रेड आपके अपोजिट जाता है, यू शुड कट योर लॉस इमीडिएटली, अदरवाइज क्या होगा कि पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट फिर ज्यादा आ जाएगा लॉस का. तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइजिंग अगर ज्यादा कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपको बहुत ही टाइट रखना है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है. और एज फार एज पोजिशनल ट्रेडिंग इज कंसर्न, तो आप उसमें एक टॉपिंग अप काइंड ऑफ अप्रोच अब कर सकते हैं, जहां पर आप एक साथ यू विल नॉट गो विथ 20% साइजिंग और 15% साइजिंग. You will progressively increase your allocation. You can start with 5%, then you can top up with another 3%, then you can top up with another 2%. So 5 plus 3 plus 2, 10%, based on different technical levels and price action. तो उस हिसाब से आप साइजिंग कर सकते हैं. बट ये ध्यान रखिए कि
always keep your maximum position sizing at the initial level. अगर आप बाद में ज्यादा साइजिंग करेंगे या बाद में एवरेजिंग में ज्यादा साइजिंग करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी और एवरेज प्राइस विल गो अप. एंड इफ यू विल पार्शियल सेल योर स्टॉक, तो जो आपने पहले खरीदा होगा, बिकॉज वाइल सेलिंग द प्रिंसिपल फॉलोड इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, तो आपने अगर नीचे में खरीदा होगा, आपने कम क्वांटिटी ली होगी, देन दैट विल बी सोल्ड आउट एंड यू विल रियलाइज लेस प्रॉफिट ऑन दैट. तो इसलिए पहले आप इनिशियली आप साइजिंग ज्यादा कीजिए एंड मेक अ पिरामिड. इसलिए बोलते हैं दैट इज टेक्निक इज कॉल्ड पिरामिडिंग, क्योंकि पिरामिड का बेस ज्यादा होता है और उसकी जो हाइट होती है वो ऊपर में टेपर होती जाती है. तो फॉलो दैट अप्रोच, दैट विल बी मोर हेल्पफुल. Great. So Shekhar ji. Yes, sir. So, before I answer, so Kundan bhai, thank you for the kind words. Before I could reply, I think the next question started. And I'm a big fan of you, by the way. So I think I keep, looking at the charts that you make, Shubham ji makes, and Ajay. Basically, the three musketeers, right? For me, at least. So coming back to the question, Prince, I think my allocation is American. I can just, without taking the names, I can just say that my top 6 or 7, they come down to about somewhere between 40 to 45% of allocation. Even though my portfolio has somewhere around 28 to 30 stocks, because I believe that the company where you have the highest confidence on, that's where you have to make the money, right? I mean, there is no point in distributing the allocation equally. Rather, identify and whatever the effort that it takes, whatever the amount of time it takes, put all the effort, spend all the time, read through every possible scenario, figure out what is the worst case scenario, do all that math. But at the end of the day, once you believe that you have done enough research, you have enough thesis and antithesis points, and now you have highest amount of conviction, go with full bank, right? So that's the approach I follow. But then the catch is that we have to scan through every possible scenario of what may go wrong, right? I mean, that's important, because otherwise, if you happen to have a 8% allocation to one of the stock and then suddenly things go wrong, it could have impact on the portfolio, and if 2 or 3 such stocks go wrong, then it's a disaster, right? So that's the catch. Otherwise, for the rest of, and out of the 30, by the way, I always would have 4 or 5 which are more for swing trading. There I limit my allocation to no more than 2% max, because there my intention is not about making too much money. Rather, whatever is the ideal cash that I have in the portfolio, instead of just keeping it just idle there, I pick up some of the fundamental stocks that I would have studied, and then as I scan through the different breakouts that the Three Musketeers post, whichever of those stocks that I have studied fundamentally, right, where I have a decent amount of conviction, I play only with those stocks. I don't, because I'm not good at price, volume, and all of those things yet. I'm still learning, and hence it's going to take some more time. And hence for now, I have limited my swing trading only to those specific stocks where I've studied fundamentally, and then they happen to pop up on one of the screeners that Shubham ji or Kundan ji runs, and then I buy those with no more than 2-3%. More of a shuffling the money, nothing more. I hope you are using 2 different accounts, sir. I hope you are using 2 different accounts. Yes, yes, 2 different accounts, correct. Definitely. Then for the amount of money that you use in your swing trading account, I hope that in that account at least use like 10% kind of, start with a 10% approach. For that amount being there in your swing trading account, use 10% allocation per trade. It is going to benefit you in the long run. कुछ efforts का कुछ अच्छा reward मिलेगा. So now, this is just my suggestion. Yes. No, absolutely, Kundanji. Just that I am still in the learning stage, right? If I had even 10% of knowledge that you or Shubhamji have, I would have started long back. But I'm still learning. So Shekhar and Shubham, let's come to passive investing, because that would be of interest to many of the attendees today. So can money be made via mutual funds? And if yes, the answer is yes. If we can make a considerable amount through mutual funds, then why go into hassle of finding a new name on daily basis and devoting time so as to study half-heartedly or maybe so what's your take on that, Shekhar? And guys, in the meantime, let me give a small pitch. Basically, if you're liking our session, please check out our handles and do give us a follow if you're liking our work. The idea is we connect to more good people and
again we learn from each other. So it's basically a two-way round thing. Yeah, Shekhar, over to you. Yes, sir. So, I think mutual funds obviously is a pretty good tool. Like I was saying, also, I even today I do mutual funds, even though I'm, quite active in the direct stocks. For two simple reasons. One, is that it teaches us pretty neat discipline, right? I mean, every week there is a certain amount that is going towards one of the funds, right? But just that I also want to make a decent money out of the mutual funds, and hence I limit it to pretty much to the small and mostly small caps. I do have one mid cap fund, and then I do one thematic fund in the technology space. But so coming back to the question, if we are making decent returns out of the mutual funds, because typically a small cap fund managed by a good fund manager can give us at least 16 to 80%, right? I mean, there are some small cap funds which have done phenomenally well, even going up to 23, 24 CAGR. But worst case scenario, a decently managed fund can give us 16 to 18%, which is pretty good, right? I mean, it's a good number. So if we have such kind of a return opportunities already available without doing any of this hard work, then why spend on the stocks? At least my personal view is, especially for the folks who have jobs or who have other businesses which are primary source of revenue, and then equities is where they're trying to make more money out of it. I would think that I am interested in doing this equity, putting all this energy is because I want to become wealthy, right? I want to become rich, not in terms of showing off somebody, rather creating a good financial base. So, and my calculation is ki I can only feel that financial independence when the money that I am making, the earnings that I'm getting out of my second profession, in this case for me it's equities, if I can measure that amount in terms of my annual expenses, right? Let's say my annual expense is 100 rupees. And then if I am making, 2 rupees out of equities in the year, is it good amount? Yeah, I mean, anytime you make little more amount, it's always a good amount. But is it going to change my lifestyle? Is it going to help me lead a better life? Is it going to help me provide my family with a better life? Probably the answer is no, right? It's not going to change as much. But if my annual expense is 100 rupees, and then the amount that I have now made through my second profession, which is equities here, is let's say it's 50 rupees, then that's going to make a difference, right? Now suddenly you have 6 months worth of expenses covered in your secondary income, which means now your savings will start shooting up. It will start going up exponentially, which means you can probably, whether it is about you traveling, or you buying a bigger house, or you having more quality of life, etc., is now doable. Or even sometimes it's saved. Not that we have to spend all the money we make, right? And then it becomes, if your annual expense is 100 rupees, and then the money that you are making through your equities is also 100 rupees, assuming you still have a job. Now you start talking about becoming rich, right? Not until then, right? The moment the amount that you are able to earn through a secondary means is equal or more than your primary means, then you are start getting into the rich space, and you continue that over a period of few more years, then you will have a much better financial state, right? So that's the assumption, that's the thesis. Why am I in the equity markets? Now, can I get there simply through mutual funds? Probably at some stage, but it's going to take a really long time, right? It's going to take maybe 20, 25 odd years. So if someone started their journey in early 20s, then by maybe late 40s, I think they will be in that state, even if they just do mutual funds and nothing else. So in that sense, mutual funds is absolutely good idea. But the reason why I think it is still worth putting that effort into the equities is, if we spend enough time in learning the tricks. For example, Shubhamji was talking about, how even just about 3 years before, he was, doing some of these trades in not so efficient way. And then he told himself, I'm going to learn this now. And then he put all that effort, and look what it got to him within the 2.5 years, right? Which basically means if we put that right effort in about 2 to 3 years, we will be able to pick up the good, foundation, whether it is on the fundamental side, whether it is on the technical side. And once you are at that state where your knowledge and your capability in terms of executing the trades, or buying the stocks, or identifying the stocks is good, from there on, the ability of you making good, successful trades only starts going up, right? So on day one, it could be 30-70, then it becomes 50-50, then it could become 70-30. The moment you are 70% successful trades, then you are start creating a niche for yourself in terms of the making money out of it. So my and this is my philosophy, and I'm pretty sure many folks on this call might also be thinking in the similar lines, that
Down the line, 4 or 5 years, I would want to be in a position where I have the ability of identifying the sectoral rotation, or I have the ability of identifying the right stock within a given sector. And I have the ability and conviction to put in larger amount. Kundanji was talking about, hey, Shekhar, put at least 10%, otherwise what the hell are you doing, right? So that sort of a conviction you get, and you put that sort of an amount, and then that gives you a decent return, whether it is 50%, 60%, 100%, doesn't matter. But as long as your capital is decent, capital is large enough, even a 50% on a large capital is a good money, right? So that will propel you into that, annual expenses multiplier, whether it is 1x annual expenses, 1.5x or 2x, etc. That will propel you faster. So whatever the journey that I would have had over a 20-year time frame via mutual funds, I could shorten all of that into maybe a 7 to 10 year if I put all that effort and do it religiously and sincerely. So that's the reason why I think it is worth putting that effort in learning the stocks, learning the fundamentals, learning the technicals, and combining both of them to get the best out of it. And hopefully, we can reach the financial independence stage at some stage. Fair enough, Shekhar. So, Shubham, I'll be taking your view on passive investing, and on the top of that, when it comes to swing and positional training, how you manage your risk, and can it be a sustainable thing for long term so as to build wealth? So generating cash flows is one thing which we understand totally, but for that one has to be very very particular and into it totally. But again, my pointed question is like, can it be a sustainable activity for a long term? Because initially when we start, our capital base is low, right? So on that capital base we can risk it, but as our capital or say our base grows, will it be sustainable so as to create long term wealth? देखिए कि स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, या बात करते हैं ट्रेडिंग से, स्विंग पोजिशनल तो उसके नेचर हो गए। ट्रेडिंग से सस्टेनेबल इनकम या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन दैट डिपेंड्स अपॉन योर एज एंड योर एग्जीक्यूशन। तो योर स्ट्रेटेजी शुड बी डिफाइंड इन सच अ वे कि आप उसको बार बार रिपीट कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि योर स्ट्रेटेजी एक फ्लूक में हो गया तो एक बार पैसा बन गया, उसके बाद आप उस स्ट्रेटेजी से कुछ पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो उस स्टाइल से तो आपका पैसा नहीं बनेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कभी कभार पैसा बन गया लेकिन उसके बाद नहीं बन रहा है, इसका मतलब देयर इज सम फ्लॉ इन योर प्रोसेस। योर स्ट्रेटेजी शुड हैव एन एज, एंड योर स्ट्रेटेजी ऐसा होना चाहिए कि वो मार्केट कंडीशन में, उसको आप हर मार्केट कंडीशन में किसी न किसी तरीके से आप रिपीट कर सकें। एक्सेप्ट अगर आप सिर्फ कैश में कर रहे हैं या लॉन्ग ओनली हैं, तो सीवियर बेयर मार्केट्स में तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन व्हेन यू मेक इट राइट, यू मेक इट बिग, तभी आप लाइफ चेंजिंग मनी बना सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट इक्विटी में हम इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं या ट्रेड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू मेक रिटर्न्स मोर देन द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन द कंट्री। अगर आप उससे कम बना रहे हैं इतना मेहनत करने के बाद भी, तो फिर ज्यादा मतलब निकलता नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड्स आर गिविंग 20% या 15%, या सबसे अच्छी म्यूचुअल फंड किसी किसी साल में 20%, 25% दे देते हैं, जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड होंगे, ऑब्वियस बात है चेंज होते रहते हैं, डिपेंड्स अपॉन देयर स्टाइल। लेकिन आप कंपेयर कीजिए कि आप उस साल के जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स थे और आपने कितना रिटर्न बनाया। अगर आप उससे भी ज्यादा रिटर्न नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर डायरेक्ट ट्रेडिंग में, स्विंग पोजिशनल में इतना रोज स्कैन करना, हर वीकेंड पे चीजों को एग्जीक्यूट करना और स्क्रीन के सामने टाइम देना, तो उतना एफर्ट फिर आपका वो वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा तो ये कि आप, जैसे माय फादर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स सिंस लास्ट 17 इयर्स एंड ही हैज जनरेटेड सीएजीआर ऑफ अराउंड 15-16%। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को फाइनेंस में या मार्केट्स में इंटरेस्ट होता है तो वो उस वजह से करते हैं, लेकिन जो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं है, या दे वांट टू मेक मनी थ्रू अ वेरी काम मेथड, उनको ज्यादा है ना, वो एक फन नहीं चाहिए या उतना उनको एक्साइटिंग चीजें नहीं चाहिए, तो वो म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स आर वेरी गुड। मैं भी ईटीएफ में करता हूँ, मैं भी ईटीएफ में पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। कुंदन भाई नोज वेरी वेल कि मैं ईटीएफ में किस तरह से ट्रेड करता हूँ, तो वो भी एक तरीका है। पर यह है कि आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो आप उसको रिपीट कर सकें और उससे उस तरह का
रिटर्न आप जनरेट कर सकें और उसको आप क्वांटिफाई कर सकें, क्वांटिफाई और रिटर्न्स, है ना, कि जो रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं वो जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे किस तरह से कंपेयर आप कर रहे हैं, क्या अल्फा आप जनरेट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी टू जनरेट अल्फा ओवर एंड अबव द ऑल द बेंचमार्क। तो बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप कुछ इस तरह से एक स्ट्रेटजी बना पाएंगे जो आपको लगातार 2 साल 3 साल 5 साल तक काम करेगी। और अगर स्ट्रेटजी आप इतना लॉन्ग टर्म में आप उसको रिपीट कर सकते हैं तो श्योर शॉट है कि आपका जो पैसा बनेगा वो इतना बन जाएगा कि जो जिसको बोलते हैं ना कि एक अलग आप स्फीयर में चले जाएंगे, योर स्फीयर विल चेंज। तो उस तरह से चीजें हो जाएंगी और उसमें ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपके पास डिसेंट, अच्छा ये कैपिटल पे डिपेंड करता है। अगर कैपिटल किसी का बहुत ज्यादा छोटा है तो उसको टाइम ज्यादा लग जाएगा बिकॉज हिज बेस विल बी लेस। अगर कैपिटल ठीक ठाक है, डिसेंट कैपिटल है और उसमें आपने वो स्ट्रेटजी जो बार बार आप उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका मैग्नीट्यूड, उसका एग्जीक्यूशन अच्छा कर सकते हैं, देन यू विल बी इन अ डिफरेंट स्फीयर। तो वो चीज एक्सपीरियंस मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और अभी तो बहुत कुछ कवर करना भी है। तो अब देखते हैं कि कहाँ तक कर सकते हैं। जर्नी तो साथ में रहेगी सब लोगों की। तो And ये just कहना था मेरा ना। just to add little more onto what Shubham was saying, so I think there are times where for example, I personally, my ability of understanding the financial sector is quite limited, right? That's not my core competence, and hence it's not easy for me to look at 20 odd companies, or rather banks slash NBFCs, and identify which one of them are making sense, right? And like me, there could be some folks whose, for example, core competency may not necessarily be technology, as an example, right? So if I want to still play a game within a sector, but I have very limited knowledge about that sector, and then if there is a mutual fund that's available in that sector where it has a good fund management and who have been doing well, then I think that's where sometimes these funds do come handy. For example, like जैसे कि मैं बोल रहा था, I have limitations with the financial space, and hence when the banking index fell really bad about 6 or 8 months ago, I just started buying bank Bs. मेरे को ICICI खरीदना है. I think I bought some of ICICI also, but other than that, nothing else. So instead of putting all my energies on I know understanding NBFCs and then understanding ROA and all that, which is not so easy for me, so I just picked up bank Bs. It's a different story that I probably exited a little sooner than later. Even after I exited, I think it still ran for another 20-25%. But at least within the short span of time, just by putting my money in bank Bs as an example, I think I made a decent amount of money, even though I may not really know that sector that much, right? I think that's the opportunity sometimes these ETFs and mutual funds do give, Prince. I mean, that's another way of looking at investing in the mutual funds. Great. So, guys, it's like almost 2 hours. How good we are on time. I have 1-2 more questions from each one of you. I'm good. We are here. Let's continue. As long as guys I'm are good. interested. No, you. Okay, great. So I think there is some issue with the speaker request. I couldn't take all, but again, I have questions on my side. So Shekhar, Shubham, and even Kundan can answer. Like, what are your risk management strategies and good literature which we can study to our benefit? These 2 questions to all 3 of you. In any order, you guys can go. Kundan ji first. So risk management, if I talk about risk management, like people take markets very like यूनिडायरेक्शन स्टेगनेंट वे में सोचते हैं कि मार्केट बस एक फैशन में ही रहेगा, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत डायनेमिक चीज़ है, जस्ट लाइक मार्केट इज़ डायनेमिक। आपके पास किसी भी ना एक स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अगर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, वो एक स्ट्रेटजी हमेशा हर मार्केट के अंदर काम नहीं करेगी। देर विल बी अ मार्केट जिसके अंदर मल्टी बैगर्स बहुत सारे मिलेंगे, देर विल बी लॉट ऑफ फिशेज टू हंट ऑन, ठीक है। बट वहाँ पे फिर आपको कई सारे ऐसे मार्केट मिलेंगे लाइक टुडेज मार्केट जहाँ पे एक अच्छा कंसिस्टेंट मूव नहीं मिलता। एक अच्छे लीडर की तरह जो स्टॉक्स हैं वो बिहेव नहीं करते, दे बिकम अ लीडर फॉर सम टाइम, देन दे डिसअपियर, गिव अप देयर मूव्स। तो रिस्क मैनेजमेंट कहाँ से आता है? रिस्क मैनेजमेंट आता है कि आप कितना रेडी टू लूज हैं और कितना आपका सिस्टम का बैटिंग रेशियो है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको इस तरह से करना है कि आइदर यू विन फॉर ओनली 20% ऑल्सो ना टाइम्स in a bad shape market, you should not
lose entirely, or you should just win even a little, but you should be in profits, not losing anything everything. Like जो बहुत सारे नेगलेक्टेड टर्म्स मेरे को लगता है कि इन द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, मुझे लगता है रिस्क मैनेजमेंट ना सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड है, बिकॉज बीन ए इन्वेस्टर फॉर लाइक ऑलमोस्ट इन माई प्रीवियस डेज, ठीक है, तो आज से 1.5-2 साल पहले जब मैं कभी इन्वेस्टिंग करता था प्योरली, सो आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट सोचा जाता है कि इन्वेस्टिंग में ना कभी पैसे लूज होते हैं, ठीक है, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए ना सबसे अच्छा टर्म है कि पोजीशन बिल्डिंग आनी चाहिए लोगों को, हाउ टू एंटर स्टॉक। जो अपने टैक्टिक्स है ना उनको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है कि हाउ टू बिल्ड अ पोजीशन। कहीं भी आए दाएं बाएं कहीं नहीं खरीदना कि मतलब उठे सुबह उठे न्यूज़ पढ़ी और उठा के पंच ऑर्डर कर दिया, ऐसे नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता। सिस्टम के साथ काम करिए और उस सिस्टम को फाइंड आउट करने के लिए थोड़े बुक्स पढ़िए। रीड विलियम ओनिल का बुक हाउ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट्स, रीड मिनर्विनी, रीड डारवास। और डारवास के बारे में एक चीज़ बताता हूँ, डारवास का मतलब ये नहीं डारवास बॉक्स जो आपके दिमाग में आता है, रीड अबाउट हिम, रीड द बुक प्रॉपरली, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगी कि ही वॉज अ किंग इन फाइंडिंग द विनर्स, ही वॉज अ किंग इन एक्चुअली पिकिंग द गुड स्टॉक्स, ठीक है, तो वो विनिंग स्टॉक्स को कैसे पिक करते थे वो सब सीखने का नज़रिया है। और इन जनरल रिस्क मैनेजमेंट के अलावा जो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मार्केट्स में ना अगर कामयाब बनना है तो एक सिंपल सी थ्योरी समझ लीजिए, जितना हो सके ना होप को अपने सिस्टम से कट करते जाइए। एक दिन में कुछ भी कट नहीं हो सकता, ठीक है, यूज़ फंडामेंटल्स, यूज़ टेक्निकल्स, बट दोनों का जो समन्वय है ना, जो मिलाप है, जो मेल है, उसको थोड़ा ना प्रोपोर्शन में रखिए। अगर कभी बात करने का मन करे डीएम्स में बात करिए या फिर मैसेज के थ्रू बात करिए, कमेंट्स के थ्रू बात करिए शुरू सर से। आई लव हिम लाइक द वे ही डू द वर्क ऑफ टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल्स। टेक्नो फंडा का जो वो काम करते हैं बहुत फिनोमिनल काम करते हैं, ठीक है, तो थिंग्स कैन नॉट चेंज ओवर अ नाइट और ओवर अ ईयर, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल अल्टीमेटली लर्न और योर ओन। बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखने लगता है बंदा, ठीक है। तो सिमिलरली जस्ट लाइक पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच डायनेमिक। इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता कि मैं आपको बोलूँ कि हाँ इतना परसेंटेज आप रख के फिक्स्ड स्टॉप लॉस के साथ काम करने के लिए, नहीं। जब आप अपना सिस्टम बनाने बैठेंगे तो सिस्टम आपको कीप टेलिंग यू कि व्हाट योर स्ट्रेटजी शुड बी, कितना सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए, सो दैट अ person like you who is losing in a streak should not lose the entire amount or should not lose at least 2-3% of the capital even. like मैं कभी भी बुरे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं होता मेरा, बिफोर दैट सिस्टम गिव्स एन एग्जिट। तो आपके सिस्टम में एग्जिट का भी सिस्टम होना चाहिए, बाहर बैठने का, सिर्फ देखने का मार्केट को। हर मार्केट ट्रेडिंग के लिए नहीं होता या इन्वेस्टिंग के लिए नहीं होता। सो मार्केट इज डायनेमिक, कीप लर्निंग अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ द मार्केट, अडॉप्टिंग टू इट, बी लाइक अ वाटर, ठीक है। सो आई थिंक ब्रूस ली का ही ये वीडियो था, ही सेज कि बी लाइक द वाटर, पुट एनी शेप एनी फॉर्म, चेंज होता रहता है अपने आप को। तो ऐसे आपको भी अडॉप्ट करना है हर चीज़ को मार्केट में, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट फ्रॉम माय साइड। एंड जो बुक्स का मैंने नाम लिया उन बुक्स को पढ़िए, थोड़ा और चीज़ों को डिटेल में पढ़िए। आई हैव गिवन अ नो हाउ, थोड़ा सा आपके अंदर मैंने एक आग सी लगा दी है, ठीक है, तो इसको जाके क्यूरियस, जो क्यूरियोसिटी की आग है वो उसको वहाँ पे जाके थोड़ा शांत करिए, उसको पढ़िए बुक्स को। सच में बहुत अच्छी बुक्स हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स कुंदन। या शेखर जी आप बोलिए। Sir, so Abhi, on the investing side of it, especially looking at the fundamentals, right? I think there are two scenarios, at least broadly, that the folks who are invested into more of a medium term to long term kind of investment. Two scenarios that we typically might run into. One is ki you have a company that you have bought, and then it is probably going through some sort of temporary challenges, and hence the question is, would you cut it down and then move to cash, or would you still hold it, right? So in that scenario, there could be two ways. One is typically there is a for example, if I take an example, a company like SRF or Radico. Maybe Radico is a classic example. So Radico, there was an expectation in the market that Radico will be debt free by sometime Q4 of last year or Q1 of this year, right? So something like that. There was an expectation in the market. And then what Radico did out of blue moon that not many guys expected from the market, they announced a capex for the backward integration. And then suddenly stock reacted negative because when the market was expecting the company to see a debt free and hence their earnings will go up and then the returns will go up, and now suddenly the management comes and says
I'm sorry, oops, I'm gonna put 300 more crores to do some backward integration, which is gonna give me a benefit 3 quarters or 4 quarters from now, right? So market reacted negative, so stock fell almost by 20-25%, right? And hence, what will you do, right? For example, in that case, I didn't really react much. In fact, I took the opportunity to add when it fell to below certain levels. And then at the same time, there's another example like Laurus Labs, where I also used to have a pretty sizable position. And at some stage, I think 3 quarters ago, Laurus Labs down journey started, and I think the first trigger for me was that the original plan that they had in terms of how they were going to diversify their revenues was not visible. It was not visible. Although we love management, we love what Mr. Dr. Chava brought to the table, and then the team that he built, the vision that he has. At the end of the day, it's not a love story, right? We have to stick to it forever. So I think when you see the fundamental reasons why you bought a business or a company, and then those reasons are now no longer really visible, or rather there's a bit of uncertainty that you can't necessarily know by when the ship will turn back, then you just exit. There is no more living in the hope. I think Shubhamji was talking about it. I mean, you can never run a show with a hope. Either वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, either way. अगर नहीं हो रहा है, and if you know exactly for what reason वो नहीं हो रहा है, and you also know that when the things will turn around, then you can keep it, obviously, right? Because nothing is going to go to the northeast straight, right? There will always be those curves. So those are the two typical scenarios that I usually run into when it comes to the medium term positions that I have. And then so there are positions where I have exited because I didn't really find the thesis valid any longer. And there are positions like SRF or Radico where not much has happened over the last 3-4 quarters, but I'm still holding on to them, and then in fact even looking to add if and when they fall, is because I believe the thesis is still valid. It's just a temporary setback for now, which is different from what market was expecting, right? So that's the kind of a scenario. And I know Kundanji already covered the technical side, and Shubhamji probably will add to it, so I'll skip the trading part of it because I'm not really qualified than them anyway. So Shekhar ji, quickly, any good literature or books you find interesting for investing, which has helped you? So unfortunately, I'm the wrong guy to answer that question. I never learn things out of a book, right? I learn from conversations. I learn from talking to people, sharing ideas with people, picking up their brains, and then getting into a healthy debate with the folks, etc. That's my approach. Maybe that's me, but otherwise. I'm the wrong guy, Prince Ji, to recommend any books. I haven't read myself, so it's not fair for me to recommend a book, even though I know names of few good books, but it's not fair for me to recommend when I have not read them myself. Fair enough, fair enough. So Shubham ji, आप बताएं. रिस्क मैनेजमेंट का ऐसा है कि एक लाइन लिख करके सबको या तो कहीं लिख के रख लें या उसको अपने मेंटल मॉडल में लगा दें कि सेल फर्स्ट एंड थिंक लेटर. तो पहले आप उसको एग्जिट कीजिए, सोचिए बाद में. प्रॉब्लम ये होता है कि लोग पहले सोचते हैं कि इसमें गड़बड़ क्या हुआ है, पहले सोच के पूरा रीजन मैं निकाल लेता हूँ, हर चीज को जान लेता हूँ, उसके बाद मैं सेल करूंगा. उसके बाद तो अब सेल होगा ही नहीं आपसे, क्योंकि तब तक तो स्टॉक ऑलरेडी 30-40-50% डाउन हो चुका होगा, फिर आप सेल नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए पहले डेंजर सिग्नल पे या पहले एग्जिट सिग्नल पे आप उस स्टॉक को एग्जिट कीजिए, बाद में उसके रीजंस का पता लगाइए. अगर कोई वैलिड रीजन होगा स्टॉक को फॉल होने का, तो वो कुछ दिन बाद आपको मालूम पड़ जाएगा. और अगर ऐसे रीजंस होंगे जो एक टेम्पररी रीजंस हैं या कुछ इस तरह के रीजंस हैं, तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक. जैसे हिमांशु भाई हैं जो द चार्टिस्ट जिनका ये हैंडल नेम है, तो एक लाइन बड़ी अच्छी उनकी लगती है कि ऐसा तो नहीं ना कि आप एक बार स्टॉक को सेल कर देंगे और जब आप वापस बाय करने जाएंगे तो आपका कीबोर्ड जैम हो जाएगा कि नहीं अब नहीं खरीदना है क्योंकि आपने पहले एक बार भेज दिया. ऐसा तो कुछ है नहीं. और नाइदर योर कंपाउंडिंग विल गेट इंटरप्टेड इन बिटवीन, अगर आपने उसी तरह से साइजिंग की जो आपने पहले की थी. तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट ऐसा करना है कि हर किसी भी डेंजर सिग्नल पे, किसी भी इस तरह के जहां पर बहुत ही हाई वॉल्यूम सेल ऑफ आ रहा है, उसके बाद भी आप ये वेट कर रहे हैं कि
स्टॉक में सब ठीक है और स्टॉक तो प्राइस तो ऐसे ही कर रहा है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि इनसाइडर्स को ज्यादा मालूम है, उस वजह से उस स्टॉक में सेल ऑफ आ रहा है। तो आप उसको चैलेंज मत कीजिए, मार्केट को चैलेंज मत कीजिए कि मुझे ज्यादा पता है मार्केट को कम पता है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है और मार्केट में तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइंड्स का कन्वर्जेंस हो रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑक्शन प्लेस है मार्केट, तो वहाँ स्मार्ट मनी भी है, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सब लोग हैं। तो क्योंकि प्राइस जो है वो लीड इंडिकेटर है, तो उससे आप इन्फ्रेंस निकाल लीजिए। और बहुत पिछले 2 साल में बहुत लोगों ने इस चीज को नोटिस भी किया होगा कि प्राइस बहुत पहले गिर चुकी थी और बाद में न्यूज उनको मालूम पड़ी। मोस्ट फेमस एग्जांपल मास्टेक है, सबको मालूम है, या लॉरस है। लॉरस में पिछले 3 4 5 महीने में असली रीजंस लोगों को मालूम पड़े, जबकि प्राइस तो पिछले साल से ही डाउन हो रहा था। तो आपको एविडेंस सामने मिल गया, यू हैव द एविडेंस इन फ्रंट ऑफ यू, तो उससे आप लर्निंग लीजिए कि। और बहुत से फंडामेंटल इन्वेस्टर जो कोर फंडामेंटल इन्वेस्टर्स है, बाद में उन्होंने भी चीज को एक्सेप्ट किया कि रिस्क मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं देयर वाज सम मिस्टेक फ्रॉम दैट पार्ट, कि उन्होंने प्राइस को एक ऐसा इंडिकेटर माना कि वो दे बेसिकली दे इग्नोर दैट कि नहीं कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। पर बाद में फिर दे हैड टू सेल 50% डाउन। तो इसलिए जब आप इस तरह से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये सभी के लिए वैलिड है। रिस्क मैनेजमेंट तो ट्रेडर के लिए तो है ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही अंडररेटेड चीज है कि अगर आप टाइम पे सेल नहीं करते हैं और उतने ही समय में आप दूसरे स्टॉक्स में जो पैसा बना सकते थे या दूसरी अपॉर्चुनिटी जो आपने मिस कर दी, क्योंकि वो क्वांटिफाई नहीं होती ना, वो हमारे सामने हमको दिखती नहीं है कि कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें लॉस करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई कैलकुलेटर हमारे पास नहीं है। लेकिन आप उसको जब इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने प्रोसेस में, थॉट प्रोसेस में, मेंटल मॉडल में, तो आप उसको जस्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से अगर हम सही टाइम पे या अपने टाइम को कंप्रेस कर लें। हाँ, एक चीज तो इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज टू कंप्रेस टाइम। टाइम कंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कम से कम टाइम पे कैपिटल रोटेट करके ज्यादा ज्यादा रिटर्न कैसे बनाना है। वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और टेक्निकल ट्रेडिंग में क्या अंतर है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में टाइम कंप्रेशन का उनका फैक्टर नहीं है, उनके पास टाइम बहुत है, उन्होंने मेंटल मॉडल बना रखा है कि मेरे पास टाइम काफी है। और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं टेक्निकल का यूज करके, उनका मेन मोटिव ही यही कि उनको टाइम कंप्रेस करना है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, टाइम कंप्रेस आप तभी कर पाएंगे जब आपके साउंड और रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होंगे। वरना तो फिर वो टाइम कंप्रेशन वाला एज जो है आपका निकल जाएगा, फिर आप हो जाएंगे यू विल बी फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो एक टर्म है ना, इनवॉलेंट्री लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे उस स्टॉक में। तो वो चीज बहुत ध्यान रखनी है। Great. Prince, sorry, just want to add one point. I think I forgot to mention that. From the investing point of view, I think two very important areas of risk management is always to have a fair idea of the valuations and the margins. Most of the stocks may, people buy it for the 3 year, 5 year, 7 year kind of a time frame. I think where we tend to make mistake is we don't notice the valuations or the margins, how they are moving. Are they abnormally high or abnormally low? Sometimes people just think buy and forget or buy and hold. वो कभी work नहीं करता है, especially in this kind of a market where things are changing so fast and there are so much of interdependency between the global macros. The buy and hold story is, I don't honestly believe it works any longer. Right, so इसलिए I think what really started helping me in the recent past is कि every time one of my stocks is running up well, the first thing I do is go check how hot the valuations are. Sometimes you bought a company at 2x price to sales and now अभी वो 15 price to sales पे बैठा है, इसका median जो है somewhere around 3 or 4x kind of a median. Then you are probably somewhere at the top of the house. Could it go further from there? Maybe it can. But is it a time for you to look at? Is it really sustainable? Are there enough growth triggers for it to sustain? I think it's worth validating that. Most of the folks would have learned, first-hand experience in the last 1 year, where most of the businesses have done so well phenomenally, and then they got so heated up that at those valuations, whatever the earnings that they were making was not good enough, and hence market started punishing it.
right? I think if we can take care of that part, where identifying has my stock reached some sort of a peak, either in terms of margins or in terms of valuations, people can actually save some of their profits. Right, right. So, Shekhar, is it fair to assume on my part? I mean, you just want to say, even if you are considering something for a long term, but if you are getting some pointers or maybe triggers on the basis of which you can say that things from here, chances are like it will correct more and going upside are limited. So, it is better to book or part book and re enter again. So, am I right on the thing you just explained? Yes, sir. Yeah, absolutely. That's a good way to put it. Yes. I think we should always keep the mind open. There is no stock where we say, okay, I have bought this. I look at this stock after 10 years. So I don't think that works any longer in the current environment. If one line I can add to summarize this, that long term should be a series of short terms. If the line fits in correctly. Correct. Yeah, that's a good way of saying it. Yeah. Great, great. So, guys, I think we had enough for today. Of course, the conversation was very interesting. Couldn't feel like closing it, but again, it's almost 2.5 hours. There are certain limitations on my side as well. So let me take a moment to thank each one of you. So, be it impeccable charts and timely intimation from Shubham's handle and the hard work which Shekharji is putting and sharing his knowledge with utmost honesty and humility, and the crisp and clarity of Kundan. So that's great, and it is a pleasure to have you guys on this forum so as to educate our friends over this spaces. And surely this is not the first, but it's just the beginning. We'll be having a lot of more of such interactive sessions down the line. And again, anything on the concluding side, or maybe you missed in a limited 30-second or 1 minute time. And again, if you feel like I'm doing some positive work, please give a shout out to me also. No, absolutely, Prince. I think you are doing fabulous job. And I know it's not so easy to identify different speakers, plan it, organize it, and get guys on board. And I think you are doing fantastic job. So please keep that up. The only call out I will give, quick 5 seconds, is don't get married to any stock. The only family that you would want to be focused on is the family that is staying with you at home, and not the stocks which are right now in your portfolio, right? So don't keep any emotional attachment. We are here just to make money, and hence don't worry about hating the stock or loving a stock. It's not worth it. That's pretty much from my side. Thank you, Prince and Kundanji and Shubhamji. Thank you, Thanks, sir. Shekhar. Hello, Thank Prince you, Sekhar ji. Bhai, Thank you. and Prince Bhai, thanks for this session. And लास्ट क्लोजिंग नोट पे एक बात कहना चाहूँगा कि मार्केट में इफ़ यू जस्ट वांट टू मेक 20-30% CAGR के लिए अगर आप हो, तो यू डोंट हैव टू वर्क टू मच हार्ड. फाइंड द राइट थिंग्स. ठीक है, सही चीज़ों की खोज में रहो, थोड़ा एक राइट अप्रोच को ढूंढो पहले. ठीक है, डोंट गो फॉर द मनी एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग. एंड चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल थिंग्स वर्क्स. एंड क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है बस थॉट्स में, और ओपन माइंडेड के साथ थोड़ा चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है. डोंट लेबल योर सेल्फ एज ए रिटेल ट्रेडर कि मैं यार इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर हूँ. इस लेबलिंग से कुछ नहीं मिलने वाला किसी को. ठीक है, अपना पैसा बनाओ, सीखने पे ध्यान दो. कॉल योर सेल्फ एज ए लर्नर एंड डू वट एवर द थिंग यू वॉन्ट टू डू विद योर मनी. मेक वेल्थ. ठीक है, हैप्पी Great. everybody and good night. Good night. Thank you. Yeah, Shubham. Thank you very much, Prince Bhai, for hosting such a wonderful session. At the end, सिर्फ यही कहना है कि have your strategy and have trust in yourself. अपने पे ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ट्रस्ट रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि जब मार्केट के सारे स्टॉक चल रहे हैं और आपके नहीं चल रहे हैं, फिर भी अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए. मेरी स्ट्रेटेजी सही है, आज नहीं है तो कल तो चलेगा ही. तो उस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है. तो ट्रस्ट रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और लगातार मेहनत कीजिए, सीखिए, बुक्स पढ़िए. कुंदन भाई ने बताया बुक्स, मार्क ब्रेवरी की, विलियम ओनील की, स्टैन विंस्टीन के वर्क पढ़िए, जेसी लिवरमोर को पढ़िए, निकोला डारवास को पढ़िए, वैन थार्प की बुक्स पढ़िए, टॉम विलियम्स की बुक पढ़िए, वॉल्यूम के ऊपर बहुत अच्छी बुक है.
रिचर्ड डिवाइकॉफ को पढ़िए, बहुत अच्छे लेजेंडरी ट्रेडर हैं, तो उनसे सीखने का कोशिश कीजिए, और बी अ लर्निंग मशीन, and the one who keeps learning in life will keep rising in life. So thank you very much. Thank you, guys. And for attendees, please give a shout out to all our speakers today who added value to us. And again, if you like our work, please check out our handle. If you find that your frequency matches with the content we share and the people we bring on this forum, do connect with us so that we get the necessary motivation so as to bring more positive minds. And again, if you have any recommendation of any person who can add value, surely down the line we can consider. So thank you again. And this session was not was is recorded, and it will be available on my handle. And again, in some time down the line, I'll be placing this over YouTube so that it will be available forever, because Twitter Spaces keep the session only for 30 days or maybe 60 odd days. So with this, I take your leave and thank you once again, and surely will connect very soon. And for the information of the attendees, tomorrow we have a Spaces with Swarnish Chatterjee, and day after tomorrow we'll be hosting Vishal Khandelwal from Safal Niveshak, and next Saturday we have Jeevan Patwa sir. So again, next 3-4 spaces are very going to be very insightful. Please feel free to check the schedule over my handle and do connect as and when we host them. So thank you, guys. Thank you once again, and good night. Thank you very much. Good night, Thank everyone. you. Good night, everyone. Good night, everyone.